आज के स्ट्रीम में स्वागत है। मेरा नाम है केडवस90 और आज वापस स्टारफील्ड खेल रहे हैं, पर वो खेलने से पहले हमेशा की तरह पूरे लिंक्स वो सब मुझे भेजना होगा, तो वो करना शुरू करता हूँ। लिंक्स डालना है और उसके साथ साथ कहाँ है लाइव स्ट्रीमिंग का गेम टाइटल भी बदलना है। ओके, सब कुछ हो गया ना। गेम टाइटल स्टारफील्ड है, सब कुछ है। और अब रिकॉर्ड करते हैं और उसके साथ शुरू करते हैं। चलो जाके इससे बताते हैं कि ये अब क्रिम्सन फ्लीट में नहीं है। Hey, I want to talk to you. Thanks to you, Delgado's cut me from the fleet. Well, you know what? You better get your own fleet, because I'm coming after you. Okay. इसे ऑलरेडी मालूम पड़ गया और ये हमारे पीछे आएगा अब। आ जा यार, मार दूंगा इससे भी। क्या है उसमें? Oh, I see. You think you're some kind of big shot, is that it? Gonna show poor Mathis a little mercy now that you're Delgado's best buddy, yeah? Well, guess what? Your generosity is getting me kicked off the key. And that means you better watch your back. Well, तुझे वो मेरा हथियार मुझसे चोरी नहीं करना चाहिए था। इतना अच्छा हथियार तूने मुझसे चोरी कर लिया। अगर नहीं किया होता तो अभी भी की में रहता। I stayed to give you a message that you better start looking over your shoulder. You'll never know when I'll be right behind you, ready to pull the trigger. I'm gonna miss you, little guy. With all your venom and half-baked ideas. Bring it in. Hug? Now get the hell out of me way! मालूम है क्या, इससे बात नहीं करूंगा। पहले नाइट भाई स्ट्रीम में स्वागत है। गुड मॉर्निंग आपको भी। When you get a moment, can we talk? बाद में यार। आपका दिन कैसे जा रहा है? Those mission boards aren't going to clear themselves. ऐसे आपका दिन तो अभी ही शुरू हुआ होगा, 11 बजे। ये कहाँ पे है यार जॉब जो मैं ढूंढ रहा हूँ? कितने बजे उठते हो वैसे संडे को? लेट या फिर संडे भी है या कुछ भी हो, सुबह जल्दी उठते हो? यहाँ पे नहीं है। और ये रख ली नहीं को, इसके बगल में ही होना चाहिए। Essentials, trade authority से भी कर सकता हूँ ना? Trade authority takes anything and everything. What'll it be, friend? Buying, selling? The trade authority takes anything and everything. The fleet's got an impressive commerce system. They even managed a legitimate doctor among their ranks. Business on the Key is like no other. It's the sole reason I'm here. For the credits. Not everyone thinks so. I'm still trade authority, not a part of the fleet. There are a few, Neva included, that see me as an outsider. Regardless, as long as the fleet has goods to push, the trade authority will always maintain a presence on the Key. I hope you're not low on credits. 11,000 बहुत अच्छे। कल रात लेट नाइट सिर्फ 5 घंटे सोए। नाइट भाई वो अच्छा नहीं होता उतना कम सोना। मैं वैसे किया करता था पहले। मेरा अलग था कि मैं रात के 4 बजे तक क्या बोलते गेम्स खेलता था और सुबह के 9-10 बजे उठ जाता था। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वैसे करना। 6 ना। 190। पर कौन सी मूवी देखने गए थे वैसे? एपिक राइफल
ये है जो मुझे मिला है, कील हॉलर। $113। रिफाइंड इयॉन, रिफाइंड इक्विनॉक्स, नोवा लाइट, ये सब बेच दो। शिट। बाय एमो, ये सारे ले लो। बहुत चीजें वैसे इसे बेचने। केसलेस शॉटगन, हाँ। हाँ, आदत मुझे भी समझ में आती है। मैं क्या बोलते हैं, सोचता हूँ सैटरडे संडे क्या बोलते हैं 9-10 बजे तक उठता हूँ, पर 8 बजे के बाद बार बार मेरी नींद उठती है। उठता हूँ, सोचता हूँ, देखता हूँ टाइम, नहीं अभी नहीं उठूंगा, फिर से सो जाता हूँ। फिर 15-20 मिनट बाद फिर आंखें खुल जाती है मेरी, पर फिर भी मैं सोता हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे एक समय है जब मुझे 7-8 घंटे की नींद मिलती है। उसके अलावा ज़्यादा तो मुझे 5-6 घंटे की ही मिलती है। तो मैं अपने आप को फोर्स करता हूँ, मैं सोऊंगा 7-8 घंटे सैटरडे संडे। तो हाँ, खुद उठने का समझ में आता है। ओह, कैसे लगी वैसे आपको जापान? जापान? जवान। जापान बोल रहा था। एपिक पिस्टल ना, मैकपल्स नहीं, शॉटी नहीं, एक पिस्टल, एक और कोई है। ये ज्यादा अच्छा पिस्टल है मेरे पास। 155, एक राइफल। पिस्टल ना, इसे बेच देता हूँ, आप सही बोलो तो। एक ये मिला है ना, लेजेंडरी पिस्टल 177। इसका कोई फायदा नहीं है, बहुत लो है इसका डैमेज। शॉटगन नहीं है, ओ डैम। ये भी शॉटगन है, ये भी शॉटगन है, तो इसे रखता हूँ। इसे बेच दो। 260 वाला जो है, रायन 56। यार थोड़े चीजें बेचने मुझे, और टांटा उतना इस्तेमाल कर रहा नहीं है तो बेच दे रहा हूँ यार ये। एक और एपिक राइफल। ओ ओ ओ 65, फायर रेट 60। ये डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा है, तो इसे बेच दो। मैंने बहुत समय से, कोई सही बोलूँ तो मूवीज़ देखी नहीं है, बहुत ही समय से। ओपनहाइमर एक मूवी थी जो सोच रहा था देखने जाऊंगा, पर फिर एंड में लेजी हो गया तो देखा ही नहीं कभी। एक शॉटगन था यार 127, ये हैवी है। 155 नहीं, ऐसे बेच रहा हूँ मैं। रिवेट 130, रेयर हैवी 10-15 ना, इसे भी बेच दो। शिट। Business. एमो, ये चाहिए। वेपन, इसे बेच दो, इसे रखो। टेक्नोफाइल, इन दोनों को भी रखना है यार। ठीक है, अब
स्पेस सूट। स्पेस सूट हो गया, पैक्स। वैरायटी भाई स्ट्रीम में स्वागत है। कैसे चल रहा आपका? वैरायटी भाई आप इतनी देर तक स्ट्रीम करते हो और फिर इतनी जल्दी उठ कैसे जाता हो, मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे आजकल कम से कम 6 घंटे तो चाहिए ही होता है। अभी 56 अभी भी पूरा हुआ नहीं है। भाई डार्क सर्कल का ध्यान रखो थोड़ा, इतना ज्यादा ना उठ जाए कि पूरा फेस को ही कवर कर ले आपके। इतना ज्यादा मत बढ़ा देना। पता चला आपका फेस फिर 10% आंख होगी, 90% डार्क सर्कल। तो जितना बेच सकता था बेच लिया मेरे हिसाब से मैंने। फॉर्चुनेट पर हाँ। Remember, all trades are restriction free. Need something? बी यहाँ पे लगा दो। अकील हॉला इसके साथ डेफिनेटली ट्राई करना चाहता हूँ। ये भी ट्राई करूंगा फिर कभी। ठीक है चलो। गेम चल रहा है। वैसे आपका फेवरेट गेम कौन सा है वैरायटी भाई, जो नाइट खरीद रहे हैं? मुझे भी थोड़ा बता दो, मैं भी देखूंगा, खरीदने की सोच लूंगा। चलो अभी जाके इससे बात कर लेते। अभी नहीं, एक आखिरी चीज करना बाकी है। यूसी प्रिजन शटल, ये बिल्कुल भी होम नहीं होगा। कार्गो कैपेसिटी नहीं, इसे होम बनाना है मुझे। पता नहीं प्रिजन शटल क्यों बन गया होम मेरा। वो होम डेफिनेटली नहीं जाता। वेपन्स का उधर है, वो रही बंदी। That last shop didn't pan out. Ship I services? need something You bigger. need it? I've got it. All business and no fun. Modify my ship. Oh, yeah. Nothing like changing it up to make a ship feel new again. मुझे सही में लग रहा है आप मजाक कर रहे हो वैरायटी भाई। Assassin's Creed सीरीज आपका फेवरेट है जो बोल रहे हो। नाइट भाई आप बता दो, वैरायटी भाई सीधा आंसर नहीं देंगे, मुझे लग रहा है आप ही बता दो इनका फेवरेट कौन सा है।
So what? Yeah. नाइवा का यहाँ से है ना, ये रही नाइवा. The fleet's the only family you need. We haven't decided. Well, it's just, we were thinking, why is it every time we go out and do a job, Rico is ends up with all our credits? My friend's got a point, Bog. Every pirate in this joint comes to the Nova for a drink. Seems to me, instead of trawling deep space for stick change, they got a much bigger target. Hit up the mission boards at the call. A lot of jingle in those pockets, Bog. Could use a good shake. आखिरी जो Assassin's Creed मैंने खेला था वो था ऑडिसी. स्टार्टिंग में अच्छा लगा था, पर वो कुछ ज़्यादा ही उसमें रिपीट होते ही जाता है, बोर हो गया एंड में मैं. पर फिर भी 200-300 घंटे खेले मैंने. There you are. All right, look. I've been lining up a score with that asshole roll call from the Siren of the Stars for months. I'm not about to let a payday slip through my fingers. So guess what? मैंने कोई भी फार क्राई गेम नहीं खेला है. My score involves a one-time event being held aboard the Siren of the Stars. If anyone finds out the Crimson Fleet's aboard that Starliner, the event will be canceled and I can kiss my payday goodbye. There's no way I'm gonna miss this window of opportunity. I'm about to tell you, so shut up and listen. Volkov's been tipping me off about some kind of bullshit charity event that the Siren of the Stars is hosting. आजकल तो सारे फार क्राई में वही होता है. ये यूबीसॉफ्ट का वही है, एक इंटरेस्टिंग विलन बनाने की कोशिश करता है हर एक उसमें. ये फार क्राई 3 का बॉस कौन था, वो वाल या कुछ उसके टाइप से, वो तब से वो सेम वो ही क्या बोलते हैं फील लाने की कोशिश कर रहे हैं तब से. No, Dombrowski's only aboard to use the Gal Bank VIP suite. Far Cry 7 में भी कोई इंटरेस्टिंग विलेन होगा. I'm sure he'll be there partying with the other spoiled brats. I can guarantee he doesn't give a crap about what's going on at the event. From the pictures I've seen, the award is set with 12 blue diamonds and covered in gold filigree. If I get jazzed to take it apart, I can turn it into a hell of a lot of cash. And best of all, the components become untraceable. No one likes to cheat in any. Nah. And I'd prefer to have the money that award's worth in my account. So you're just gonna have to deal with it. Look, you can make all the jokes and excuses you want. But if you don't come back with the ES award, I'm gonna deduct it from your pay. Either way, I get my money. How much you walk away with is in your own hands. Got it? So if we want to see any juice at the end, we gotta play ball. Message received. रुकना, फार क्राई 3 खेल लो, समझना सारे खेल लिए. वो एकदम सही है, जैसे वही मैं कह रहा था नाइट भाई. ये फार क्राई 3 में एक अच्छा सा बॉस, बहुत इंटरेस्टिंग बॉस बना दिया इन्होंने, वाल या जो भी उस बंदे का नाम है, और तब से वो सेम चीज ट्राई करते जा रहे हैं यूबीसॉफ्ट. इंटरेस्टिंग विलेन को बनाने की कोशिश ताकि लोग वो खेले उसको, वो बॉस के लिए. एक प्राइमल शायद थोड़ा अलग था, पर पता नहीं, मैंने कोई फार क्राई खेला नहीं है सही में, तो मैं बोल भी नहीं सकता प्राइमल के बारे में. अब प्राइमल की खुद का इशू ये था कि उन्होंने पूरा कॉपी कर लिया मैप पूरा का पूरा, वो फार क्राई 4 या 5 से एग्जैक्ट कॉपी था मैप का. तो हाँ, यूबीसॉफ्ट का वही है. Assassin's Creed Mirage pre-ordered 2 times.
मतलब एक बार भी प्री ऑर्डर नहीं किया आपने, समझ गया मैं वैरायटी भाई, मतलब एक बार भी आपने प्री ऑर्डर नहीं किया है वो गेम। Yeah, ES, Earth, Savior. Get it? Come on. Keep up with me here. I got about 17 other things to do and you're holding me up. All Rokoff does is feed me information. If I ask him to lift a finger, he gives me enough sob stories to fill a freighter's cargo bay. If you want my advice, leave him completely out of the loop. Otherwise, it's gonna cost both of us some credits. Then it's settled. Good. All right, Rook, we're done here. Now, get your ass to the siren and bring me my goods. Because that's exactly what you are. A rookie, a newbie, fresh meat. Beneath all of that inexperience, I'm sure you have an actual name. But honestly, no one gives a damn. So get used to hearing that word. Until you earn your stripes, you're a rook to everyone in the fleet. Stay sharp, Rook. Are you looking to start something? वाह, यहाँ का म्यूजिक इतना लाउड है। एक मिनट रुकना नाइट भाई, मुझे यहाँ से निकलना है थोड़ा। लकी मार्केट प्लेस, मेरा फेवरेट, जब भी मैं फेवरेट सोचता हूँ ना, मेरे दिमाग में हमेशा क्या बोलते हैं बॉर्डरलैंड्स 2 आता है, सही बोलूँ तो। भले ही वो मेरा मोस्ट प्लेड गेम नहीं है बॉर्डरलैंड्स 2, पर जब भी फेवरेट गेम के बारे में सोचता हूँ तो हमेशा दिमाग में सबसे पहले बॉर्डरलैंड्स 2 आता है। मेरा मोस्ट प्लेड गेम तो पर डेस्टिनी है, डेस्टिनी 2 जो भी बोलना चाहते हो, तो उससे बहुत बर्न आउट हो चुका हूँ मैं। अब ये अगला एक्सपेंशन उसका जो है फाइनल शेप, उसके बाद मैं बंद करने वाला हूँ डेस्टिनी को। Always listen to Delgado, unless you want to get killed all across the key. Soon, जाना everyone मैं? is going to learn to fear the fleet. ओके, यहाँ पे ना, चलो कॉकपिट। I have something for you when you got a sec. भाई मैं अपने खुद के सेव फाइल्स को पता नहीं कैसे वापस लाऊं। ये Xbox से मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। ये Xbox 1 में मैंने खरीदा था बॉर्डरलैंड्स 2 गेम ऑफ द ईयर एडिशन ना, हैंडसम कलेक्शन, और उसमें काफ़ी खेला था। पहले तो पीसी में खेला था मैंने बॉर्डरलैंड्स 2, उसके बाद एक बार फिर से मैंने खरीदा इसमें Xbox 1 में और खेला, पर उसके बाद मेरा Xbox खराब हो गया, वो ऑन ही नहीं हो रहा था। ऑन होता था फिर अपने आप बंद हो जाता था। मैं उसको वापस कैसे लाऊं वो सेव फाइल्स, वो ट्राई कर रहा हूं खुद। आपको क्या गिफ्ट करूं वैरायटी भाई? सही बोलूं तो बॉर्डरलैंड्स 1 के साथ काफ़ी इश्यूज थे। वो इश्यूज उन्होंने बॉर्डरलैंड्स 1 पसंद आया था और उसके साथ इश्यूज थे, वो इश्यूज उन्होंने बॉर्डरलैंड्स 2 में उन्होंने ठीक कर दिया, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज। इसलिए मुझे बॉर्डरलैंड्स 2 बहुत अच्छा लगता है। ओह, यहाँ से ही टॉप कर सकता हूँ। मेन इशू बॉर्डरलैंड्स 1 के साथ जो मेरा था वो था मैप। वो कॉम्पस टाइप का मैप था बॉर्डरलैंड्स 1 में। बेसिकली ऊपर एक लाइन होगी और लाइन जब हिलोगे लेफ्ट या राइट तो उसके हिसाब से वो लाइन में दिखाएगा कि तुम ऑब्जेक्टिव की तरह फेस कर रहे हो कि नहीं। वैसे टाइप का मैप था वो। मुझे सबसे खराब लगता था बॉर्डरलैंड्स 1 में। वैसे भी वैरायटी भाई, आप अभी तो वो खेल रहे हो, क्या बोलते हैं, ड्रैगन्स डॉगमा। नहीं, ड्रैगन्स डॉगमा नहीं। एक मिनट, आपने कोई और गेम शुरू किया था या वही कर रहे थे ड्रैगन्स डॉगमा? हाँ, ड्रैगन्स डॉगमा ही खेल रहे हो अभी भी। बीच में पता नहीं क्यों मुझे लगा आपने कोई और शुरू कर दिया था, पता नहीं क्यों लगा था मुझे।
बॉर्डरलैंड्स 3 अगर गेम प्ले पसंद है बॉर्डरलैंड्स का तभी खरीदो, क्योंकि उसकी कहानी कुछ खास नहीं है, कुछ भी नहीं है। गेम प्ले पसंद है तभी खेलो। चलो बात करते हैं। You're back. So how did it go? Frankly, it's because we've never gotten this far before. The last agent I sent to infiltrate the Crimson Fleet ended up in a morgue on New Atlantis. बॉर्डरलैंड्स 2 ओपन वर्ल्ड है। बॉर्डरलैंड्स 3 पर ज्यादा हब टाइप का है, क्योंकि बॉर्डरलैंड्स 3 में अलग अलग वर्ल्ड्स हैं। बॉर्डरलैंड्स 1 और 2 एक ही उसमें होता है। वेल ओपन हब ही समझो, एक्चुअल में सही मैं बोलूँ तो ओपन हब ही है, ओपन वर्ल्ड नहीं, क्योंकि डिफरेंट मैप्स के बीच में लोड होता है उसमें, तो हाँ ओपन हब है वो। Even with our best intelligence equipment, we can monitor very little from the vigilance. We can pick up local communications chatter and use long-range scans to see where you travel. But when you're on the ground, you're on your own. If we get too close, we not only ये expose ड्रैगन्स ourselves डॉगमा to में attack, दूसरे बंदे we इक्विपमेंट might भेज blow सकते your हैं। cover, and that could get everyone killed. Then things are moving forward. Perfect. Nice job, Rook. I was certain we'd fool Delgado, but never. She's a sharp one. Overcoming her scrutiny is no small matter. Did you discover anything worth reporting yet? If the intelligence I've read is accurate, Delgado is a charismatic leader, but a bit short हब on सही है, judgment. क्योंकि सही That's में why वो we ओपन want to वर्ल्ड बोलते stay रहते on हैं, वो his good बहुत side. ज्यादा खाली होता Stay है। away from Neva. She's shrewd, and she sniffed out everything we've thrown her way. ओह यस, अगर वैरायटी का पॉन है, ओह हायर भी कर सकते हैं दूसरे बंदों का पॉन। हाँ इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। ये मॉन्स्टर हंटर में अगर खेला है तो उसमें भी ऐसा कुछ है थोड़ा बहुत, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। क्या बोलते हैं उसमें पैलिकोस वो सब के तुम अपना टीम बना सकते हो, उन्हें अपने खुद के मिशन में भेजने के लिए, और दूसरे प्लेयर्स के पैलिकोस को हायर भी कर सकते हो चुनने के लिए। ऐसा ही कुछ है शायद, अगर मॉन्स्टर हंटर का भी खेला है, मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड खेला है तो पता नहीं दूसरे मॉन्स्टर हंटर में है कि नहीं, पर ये अच्छा है। ये ऐसे नहीं कर सकते पर मॉन्स्टर हंटर में कि वो पॉन को गिफ्ट दे दो और फिर वो गिफ्ट एक्चुअल प्लेयर यूज कर सकता है। इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है ये। वैसे वैरायटी भाई अगर आप यहाँ पर हो तो आपको क्या बोलते हैं ड्रैगन्स डॉगमा कैसे लग रहा है? मैं वो गेम खेलने की बहुत सोच रहा हूँ, पर बाद में खेलूंगा मोस्ट प्रॉब्ली 2000 अगले साल के स्टार्ट में कभी खेलूंगा, पर खेलना चाहता हूँ वो गेम ड्रैगन डॉगमा 2 रिलीज होने से पहले। वैरायटी भाई अगर हो तो आपके विचार क्या हैं उस गेम पे, ड्रैगन्स डॉगमा पे? I understand your concern, but you can rest assured that every member of this crew has been thoroughly vetted by both myself and Lieutenant Toft. Any information that you turn over will not be leaving this ship until it's fully encrypted and encoded. I give you my word. Okay, चलो बोलते हैं फिर, पूरा वर्ड मिल गया इसका। Legacy. Why does that sound familiar? Wait a moment. Are you telling me Delgado may have actually located Crix's legacy? You're kidding. Crix's legacy. I always wondered if that damn thing was real. Judging from the fact that this data involves both Crix and legacy, वैसे एक्चुअली ये एक पर्टिकुलर बंदे का पॉन कैसे ढूंढेंगे उसमें? I suppose it's possible, sir. Intelligence picked up a bit of chatter on that subject recently. फ्रेंड लिस्ट का वो चेक कर It was सकते some हैं। sort of tall tale or a story to attract recruits to their cause.
Well, we can solve that little mystery in about 10 seconds. Let me see what we have here. Nope. There are no records of a Gal Bank transport named the Legacy in the database. I think Delgado's trying to manipulate you. What do you think, sir? I think there's no record because Gal Bank is hiding something. Delgado's no fool. If he risked his own neck to get that information, then he must be on to something. We have to take this seriously. What's your next move? शुभ भाई गुड मॉर्निंग। और क्या बोलते हैं, लाइज ऑफ पी खत्म करने के लिए कांग्रेट्स। वो थोड़ा बहुत देखा आपके फाइट्स, थोड़ा बहुत। आपका वो एंडिंग वाला फाइट देखा वो मैनस के खिलाफ, और फिर एक दो ट्राइज देखे आपके वो पपेट, क्या बंदे का नाम, गेपेटो का, गेस्टापो या जो भी उस बंदे का नाम है, उसका जो पपेट था उसके साथ देखा, और फिर आपका बैड एंडिंग लेते हुए भी देखा आपको आज सुबह उठ के। That one's simple. We monitored your ships heading down to the surface of Suvorov. In fact, when you returned to the key and you didn't immediately follow, well, we almost thought our operation was terminated. Can you imagine the amount of embarrassment Gal Bank would have to endure if they listed a lost transport in the ship registry? Doesn't matter if that ship went down 5 or 500 years ago. If news gets out that a bank has misplaced money, it would tank their value. Well, समझ में आता है क्यों लिया। वो बॉस को अगर मारने की कोशिश करते तो फिर और 4-5 घंटे आपको उठा रहना पड़ता। Trying to do the exact same thing. We can't let Delgado get his hands on what could potentially turn out to be the largest haul of credits the Crimson और आप उससे कुछ ज्यादा ही तंग हो गए थे उस गेम से भी। Maybe I should head out to New Atlantis, sir. दिख रहा ही था I could स्ट्रीम press में the भी। Gal Bank execs for information. Get ahead of everything. No. Let's allow this to run its course. We have our agent here feeding us information. I think that's good enough for now. There's more to this than just finding the location of the transport. Jasper Cricks was clever. For some reason, he never got there. Because the Crimson Fleet would be a totally different adversary, and Cricks wouldn't have disappeared years ago. Even if they hid the money with that damn human computer Shinya Voss, our forensic accounting people would have found that data. No. The Crimson Fleet are in dire shape right now. छोले भटूरे होंगे They haven't seen that much currency. मजे लो छोले भटूरे के। It's imperative that you do. If the Crimson Fleet gets its hands on a transport full of currency, it would be disastrous for the settled systems. I need you to do whatever you can to bring us more information. And for God's sake, don't kill anyone on that Starliner. You're both dismissed. लेवल अप भी हो गया। अब ये लेवल अप हो गया तो एक जिसका तब से ट्राई कर रहा हूँ, वेपन इंजीनियरिंग। क्राफ्ट 5 वेपन मॉड्स। हाँ, फाइनली वेपन इंजीनियरिंग लेवल 1 हो गया कम से कम। वैरायटी भाई, शुभ भाई पूरा क्लियर माइंड के साथ ये डीएलसी खेलना चाहते हैं साइबरपंक का। आज अगर साइबरपंक का डीएलसी शुरू करेंगे तो दिमाग में साइबरपंक नहीं होगा, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ छोले भटूरे होंगे। एक मिनट यार, मुझे थोड़ा रिसर्च वो सब ढूंढना है इसका। यार ये नहीं, चलो कहीं और ढूंढते हैं फिर ये रिसर्च वो सब का। पता नहीं कहाँ पे ढूंढेंगे पर ढूंढते हैं। ये कौन सा गेम मैसेज किया था आपको वैरायटी भाई, शुभ भाई ने?
जो आप चाहते हो जल्दी से खत्म करें। लाइजा पी तो खत्म कर दिया उन्होंने। अब कौन सा बचा है? Travel to the siren of the stars. Jump. Siren of the stars की तरफ जाना है ना। अब कोई हेल नहीं, सीधे डॉक। बोर्ड। कहाँ पे जाना है अब? वैसे नाइट भाई, शुभ भाई और वैरायटी भाई के गेम्स के बारे में काफी बात कर ली। आप अभी कौन सा गेम खेल रहे हो? ओह, इससे बात ये है क्या? About time you showed up. All right, I want to know what's going on. I've been trying to get Delgado's attention for, I don't know, 3 years now. And what do I get? Nothing but radio silence. Then out of nowhere, just when Neva and I are closing in on a huge score of our own, Delgado orders me to help you out. Oh, sure, sure. First a tour, followed by a formal dinner at the captain's table. Let's get one thing straight. You're here for business, not for a vacation, so let's start by talking about Delgado's sudden olive branch. Because the only way to achieve a win is by agreeing to play the game in the first place. Ooh, Arkham series और Cyberpunk 2077. I don't make the fleet. सही गेम खेल रहा है, Lisa Arkham series, Cyberpunk 2077. Credits richer. That's almost a win-win, don't you think? Well, 2.0 के बाद तो काफी अच्छा हो गया apparently. Yeah, I figured you'd say something like that. Just another one of Delgado's loyal little soldiers, huh? Fine, have it your way. So Neva's message said you were here for Dombrowski. Was that all she sent you here to do? Or was there something else you were sent here to steal? Don't play games with me. We both know pinging a message back and forth to the Arkham series के कितने गेम्स खेले वैसे आपने नाइट भाई? That we have to do this job. We're supposed to be working together on every part of this. So, you're gonna tell me what else you're here for or not? Nope, that's the only reason I'm here. Okay. So why are you targeting a Gall Bank exec anyway? Not exactly your average Crimson Fleet prey. Why the interest? Merchant vessels, transport, supply convoys, mining settlements, you get the picture. But taking on a megacorp, that's a really big deal. Something the Crimson Fleet stayed away from in the past. Sounds to me like Delgado's either getting desperate, or this is leading to an even bigger score. Oh, third playthrough. Oh, I see. We're playing this game now. Fine, fine. Well, you might as well turn around and hop back aboard your ship because you're not getting near Dombrowski without my help. I don't see a way around a little quid pro quo. Well, it appears we have a mind reader here. भाई आपने नाइट भाई आपने साइबरपंक कुछ ज्यादा ही खेल लिया लगता है, मुझे भी बुला रहे हो। I want back into the Crimson Fleet. It's as simple as that.
Of course I do. But who wants to settle for a one-time payout? I prefer to play the long game. अभी के लिए आर्कम सीरीज ही खेलो. साइबरपंक को ज़्यादा ही खेल लिया. Getting my ass back into the fleet means I regain access to Shinya Boss. And that's as good as an endless stream of credits. You'd better, or you're gonna have to find another Gal Bank executive. As long as Dombrowski's on the ship, he's all mine. You're in no position. Fine. You want to play it that way and suit yourself. Dombrowski's a full-timer aboard the Siren of the Stars. Probably spends more time cruising the space lanes than actually working. Fortunately, the Siren is hosting the Terran Preservation Society. Most played game कौन सा night भाई? Larry won't be able to resist showing off his VIP clout. To get what you need, you're gonna have to attend the gala, talk to his fellow philanthropists, and dig up some dirt. ये जानना चाहता हूँ साइबरपंक का भी थर्ड प्ले थ्रू और आर्कम सीरीज का भी. The event's a complete sham. Bunch of rich snobs getting together and throwing a party for themselves. These people couldn't give a damn about Terran preservation or any other charity for that matter. Someone with enough disposable income to afford a permanent 6-figure cabin aboard one of Trident's finest space liners. Consider it similar to owning a luxury mobile vacation home. Plaything for the wealthy, you get the gist. Yeah, well, lucky for you, it's not black tie, so you'll be fine. The Witcher 3, Cyberpunk 2077, and Dragon's Dogma. To access the Starfield ballroom. If you need my help, I'll be relaxing in one of the upper-level lounges. Head inside and mingle with the crowd. अच्छा game list है most played का. So they'll be more than happy to share his dirty secrets. He's a VIP executive, which means he either worked really, really hard using blood, sweat, and tears to make the arduous climb to the top, or he backstabbed, lied, cheated, and betrayed his way up the corporate ladder. From what I've heard, it's the second option. Dragon's Dogma में खेलने वाला हूँ. Cyberpunk 2077 देखूंगा फिर कभी. Witcher 3 भी बाद में ही खेलूंगा. Trident equips all of their starliners with the latest acoustic threat detection. मैं पहले Witcher 1 और 2 खेलना चाहता हूँ. Witcher 3 के साथ पहले. Patience and kill anyone aboard the ship. Security will be alerted and all hell will break loose. Anyway, I suppose that's enough to get you started. Good luck. You seriously need to ask. Okay, I'll give you 2 reasons. First, Gold Bank protects their own. Kill Dombrowski, and they send Ecliptic after every Crimson Fleet ship they can find. Not something Delgado wants, I suspect. And second, you offer Gal Bank employee in every single Gal Bank facility in the settled systems will triple their security. I'm gonna guess that won't help with whatever your plans are regarding Gal Bank, now will it? They claim their goal is to celebrate the soul of the Earth, the culture, the people, and the ideals of the past. In their minds, Earth is now dead, which is why they feel that preservation of its remaining aspects is so important. In reality, this is what happens when folks with far too much time and far too much money get together to make themselves feel like they're contributing to society. What the hell? When I asked you earlier, you said you weren't here for anything else. Not only did you lie to me, but now you're telling me that she sent you after the award alone? नहीं बोलना चाहिए था इसे.
Yeah? And I suppose it's just a coincidence you happen to be asking me about the very thing Neva and I agreed to steal together. I can't believe she's trying to cut me out of this deal. Without me, the award never would have ended up here in the first place. I spent months आपने ये ड्रैगन स्टॉकमा का स्पीड रन ट्राई किया? to hosting the gala affair aboard the Siren of the Stars. I had to arrange the event to make sure that the award आपका was फास्टेस्ट aboard the कितना है ship. स्पीड रन उसका? Neva said she'd do the rest. When I got a message about Dubrovsky, I assumed she'd be tagging along to steal the award. But looks like she sent you in her place. That would imply that Neva has a good side to begin with. Fine, I'll help. But you're doing all the legwork, and I'm still taking my cut of the payout. So tell me, what's the status of your plan? कोई प्लान है करने का स्पीड रन ट्राई? I once saw Neva strip down a UC security ship and sell the parts back to the UC through a shell company. उसके बाद स्पीड रन करोगे? Okay. If that doesn't put your concerns to rest, I don't know what will. Now tell me, what about the status of your plan? How can I help? Okay, then let me point you to the person in charge of the award. हार्ड डिफिकल्टी हार्डेस्ट है क्या? क्योंकि मैं उसके साथ ही शुरू करने की सोच रहा हूँ सबसे पहला रन हार्डेस्ट डिफिकल्टी के साथ. I'd press her to reveal where the award's hidden, and we can go from there. And if you're thinking of pulling the trigger on poor Miss Holbrook, remember that any gunfire is gonna set off the ship's alarms. As long as you remember that I'm getting paid my cut, I'll help you with anything you want. What's the status of your plan? Yeah. Oh, and while you're at the gala, avoid the cannabis. They're frozen, not fresh. Shit यार मैंने क्या गलत कर दिया ऑप्शनल लोकेशन. ओह मुझे लगा था ये ऑप्शनल था कि डू नॉट टॉक टू ये बंदा जो भी है अबाउट द किल लैरी. बिल्कुल नहीं करूँगा. स्पीक टू शीला अबाउट द यस अवार्ड. ठीक है. ये ड्रैगन स्टॉकमा का हार्ड डिफिकल्टी कितना डिफिकल्ट है पहली बात? क्योंकि सही बोलो तो ये स्टारफील्ड जो है वो भी मैं हार्डेस्ट डिफिकल्टी में खेल रहा हूँ और स्टार्टिंग में मुश्किल था पर उसके बाद काफ़ी आसान हो गया सही बोलो तो अभी. मैं बेरली मरता हूँ. कई बार तो मैं 3-4 घंटे खेलते रहता हूँ एनिमी से लड़ता भी हूँ तब भी नहीं मरता हूँ मैं. इतना आसान हो गया है ये. शीला के पास कैसे पहुँचूँ मैं? Trident must have spent a fortune equipping this ship with triple redundancy in almost every attack. One shot. Damn. Captain Rukov said you're allowed in any of the crew-specific areas. Just don't touch anything, please. These newer vessels more or less run autonomously, which doesn't... ये steal from नॉविस अनलॉक. हाँ NG प्लस रन्स के लिए हार्ड डिफिकल्टी बैलेंस्ड है. वन शॉट. The best part of my job is getting पर फिर भी ट्राई कर सकते हैं क्या? क्योंकि मुझे गेम्स के हार्डेस्ट डिफिकल्टी में खेलना पसंद है काफी सही बोलूँ तो. ऑफ कोर्स अगर कुछ ज़्यादा ही मुश्किल लग जाए तो मैं कम कर देता हूँ कभी कभी पर फिर भी मैं हमेशा पहले हार्डेस्ट डिफिकल्टी ट्राई करता हूँ. ओह 100 प्लस लेवल. अरे ऊपर कैसे जाते हैं यार इसका? मैक्स लेवल क्या है वैसे इसका? ड्रैगन स्टॉकमा में मैक्स लेवल क्या है?
के इधर ही जाना था। If you wish to have a drink at any of our lounges, be sure ये रही। चलो शीला से बात करते हैं। Have you tried the canopies? Horrid. Positively horrid. Okay, ठीक है। Is this important? I don't have a lot of time for idle nonsense. Yes, I'm extremely busy preparing for the award ceremony, so this better be important. Not at all. I was assured that this particular ship was outfitted with the absolute latest and cutting-edge security. I am completely confident that Trident Luxury Lines will keep all of us safe. Probably in a few days. I don't want the award transfer to actually occur until we're safely in orbit at our destination. Of course, if I keep getting interrupted, the ceremony might never take place at all. Yes, I am. Actually, I've been entrusted with the transfer of the award for the last 7 of its 9 years. Why do you ask? Well, the Earth Savior Award is one of a kind. The Blue Diamonds alone are irreplaceable. सही है कि Since वो we चेंज कर can't सकते हैं। produce a new award every year, it's instead passed from one recipient to the next. I supervise the transfer and make certain that there's ample security during transport and at the destination. सही है, गेम के बीच में चेंज कर सकते हैं। During my tenure? Certainly not. There was an unfortunate incident where my predecessor attempted to sell the award to the highest bidder, but that was quickly resolved. Needless to say, they'll be spending the rest of their life in a UC prison. 200 levels, huh? Forget it. I refuse to have a repeat of last year's fiasco, where the name leaked early and started a common brawl. The winner's name is safely sealed away with the award itself, inside the master safe located at the purser's office. Now, if you'll excuse me, I have much more important things on my agenda than to speak to the likes of you. Okay. How to access the Any complaints about your cruise should be directed to one of the staff. वो सारे 200 लेवल चाहिए क्या सारे स्किल्स को अनलॉक करने के लिए? या फिर क्या बोलते हैं 200 ज़्यादा था बस उसके लिए कि बस कोई नंबर डालना था उन्हें, तो इसलिए बस डाल दिया 200। On behalf of Trident Luxury Lines, I'd like to welcome you aboard. सेव कर देता, मुझे लगता है इसे परस्यू करना होगा। परसुएट I mean. Welcome to the purser's office. I'm Chief Purser Murata. How can I be of assistance today? An excellent question. My responsibilities include all of the Siren's financial, customs, and commercial goods transfers. Honestly, I really enjoy the work. I get to meet people at every port of call instead of being constantly stuck below decks. Oh, absolutely. The safe is magnetically sealed and shielded with multiple layers of fully damage-resistant, vacuum-proof. वो अच्छा है फिर। अलग In an unlikely XP event, system our level vessel is skills के boarded लिए। and the threat detection alarm is triggered. The safe will be permanently sealed until it reaches port. In the even more unlikely event this ship is destroyed, we can assure you that your loved ones will be able to recover your goods from the wreckage. So, as you can imagine, वैसे ड्रैगन स्टॉक में आप इतना खेला है तो आप ड्रैगन स्टॉक में 2 का बहुत इंतजार कर रहे होगे। I've only seen it briefly myself, but I can assure you that it's quite lovely. Unfortunately, the item is locked inside of our safe, which can only be accessed by presenting an appropriate claim ID. Is there anything else I can assist you with today? Acquire the ES Well, award claim if ID. you change your mind, I'll be here. Have a wonderful trip.
An excellent question. My responsibility. Yes. Honestly, I'm sorry. It's against Trident policy to discuss our personal feelings towards a fellow crewmate. I suppose. All right, but you didn't hear this from me. Do you understand? I don't want to lose my job. I like Captain Rokov, but I think he's mixed up with some very dangerous people. I was bringing some वैसे आपने वो गेम प्ले देखा वो नए वाले का and I found a slate with a message he received from someone named Delgado. Oh shit. That would normally be fine, but the message mentions the Crimson Fleet, as in pirates. नाइट भाई आपको दिख रहा है मेरा स्ट्रीम? If we want to grab it, the slate should still be in his quarters, somewhere. Please let me know if there's anything I can do to make your stay more comfortable. एक मिनट क्या हो गया इससे? नाइट भाई आपको मेरा स्ट्रीम का गेम प्ले का कुछ दिख रहा है? क्योंकि मेरे स्टूडियो में पूरा ब्लैक दिखा रहा है. सही दिखा रहा है ना? पता नहीं मेरे इसमें पता नहीं पूरा ब्लैक दिखा रहा था. अब दिखा रहा है. YouTube स्टूडियो में पूरा ब्लैक दिखा रहा था स्क्रीन. हाँ जैसे मैं पूछ रहा था आपने वो नया गेम प्ले देखा होगा इसका. तो सही बोलो तो स्टार्टिंग की जो क्लासेस हैं वो थोड़ा उतना कुछ खास नहीं लग रहे थे, पर वो जो एडवांस क्लासेस थे बहुत अच्छा लगा मुझे. वो जो 2 दिखाए उन्होंने एडवांस क्लासेस, तो उससे रिलेटेड ये ड्रैगन्स डॉगमा 1 का गेम प्ले कैसा है, क्योंकि वो 2 एडवांस क्लासेस के लिए मैं मस्त खेलना चाहूँगा. ड्रैगन्स डॉगमा 2 इतना सही था. वो पूरा फास्ट मूवमेंट करो, पूरा मैजिक के साथ जो एडवांस क्लासेस में था बहुत सही था. चलो acquire the ES award claim ID. तो अगर गेम प्ले ड्रैगन्स डॉगमा 1 का भी वैसे उतना अच्छा है तो मैं डेफिनेटली खेल और भी ज़्यादा एंटिसिपेशन है मेरा बढ़ जाएगा खेलने के लिए. वो Claudia Swiss status single passage. If emergency contact is required, please check passenger cabin of Dombrowski Larry for passenger's current location. Okay. Prohibited without a cabin access pass. मेरे पास तो cabin access pass. Oh, unlock करना होगा. Okay. सही है. तो फिर मैं भी ड्रैगन्स डॉगमा 1 खेल के फिर ड्रैगन्स डॉगमा 2 का एंटिसिपेट करना शुरू कर दूंगा. और वही है, मैं मोस्ट प्रॉब्ली 2024 में ही खेलूंगा. सीरियसली इससे लेना होगा. Must you continue these unwelcome interruptions? I'm a very busy woman. Excuse me? सीधे पूछ लिया बस. Goodness name, would I do something as foolish as that? Persuade. And why, in goodness name, would I possibly agree to that ridiculous demand? और Is this really what we're doing? Yes, we are. Nobody will ever know you told me, I promise. Please हो जाए. Yes. Maybe. Need to think about it. बस एक और. This isn't getting us anywhere. Ah, shit. This is utterly preposterous. I'm not giving you anything. I should say so. The nerve of you to even ask something so stupid. Shit, yeah. Pleased to make your acquaintance. For your claim ID. और तरीके से.
हाँ वो भी है, ज्यादा कुछ उन्होंने गेम प्ले में एबिलिटीज दिखाई नहीं थे सही में। इससे बात करना होगा। सेव करो और फिर पिछला वाला लोड करो यार, मैं उसे कन्विंस करने वाला हूँ। सही बोलूँ तो अगर वो बेस गेम का जो एबिलिटीज हैं वो एडवांस से उसके ज़्यादा पावरफुल एबिलिटीज या ज़्यादा आई मीन एडवांस बोलेंगे या क्या बोलेंगे, लेटर एबिलिटीज एडवांस क्लासेस के थोड़े भी पास से मज़ा आ जाएगा गेम में सही में। और वो मैंने थोड़ा बहुत वो भी देखा था कि ये जो एनिमीज है उनके बड़े एनिमीज स्पेशली उनके पीठ में कूद के उन्हें मार सकते हैं, उनको ब्रिज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रैगन्स डॉगमा 2 में। वो सब इतना मस्त था यार देखने में। Must you continue these unwelcome interruptions? I'm a very busy woman. Excuse me? And why in goodness name would I do something as foolish as that? And why in goodness name would I possibly agree to that ridiculous demand? Oja. I wish I could, but if anybody found out I'd helped you. Ooh. I understand. Nice. I'm not trying to be difficult either. No, I can't. Shit. Sorry. Oh, this is utterly preposterous. I'm not giving you anything. I should say so. लोड करो, इसे मैं कन्विंस करना चाहता हूँ यार। हाँ मैंने सुना था एक्चुअली कि ड्रैगन्स डॉगमा 1 में काफी कट कंटेंट था। Must you continue these unwelcome interruptions? I'm a very busy woman. Excuse me? And why in goodness name would I do something as foolish as that? And why in goodness name would I possibly agree to that ridiculous demand? Yeah, I hope so. Hold on. Maybe we can work something out. Okay, 3 wala. I mean, yes. It might be okay. Oh, just take the damn thing already. Listen, maybe you can keep this between us. If the award goes missing, there's no need for the insurance company to get involved. Definitely. Steal the ES award. Don't forget to keep your Starfield pass handy. हाँ वैसे भी मैंने क्या बोलते हैं ये when you have the time. बाद में यार कितने बार बोलेगा तू? मैं क्या बोल रहा था? हाँ मैंने शुभ भाई के साथ डिसाइड किया था कि दोनों एक साथ शुरू करेंगे वो ड्रैगन्स डॉगमा 2 तो ड्रैगन्स डॉगमा 1 सॉरी तो खेलने का तो डेफिनेटली प्लान है मेरा। Please let me know if your voyage is unsatisfactory in any way. तो डेफिनेटली खेलूंगा वो, पर मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल ही खेलूंगा वो, खेलूंगा भी तो। इस साल कुछ ज्यादा ही गेम्स है जो मैं खेलना चाहता हूँ। क्रेडिट्स डेफिनेटली, पर ओह यार उन्होंने एक्चुअल अवार्ड नहीं दिखाया, बस एक केस के अंदर रखा हुआ है। क्रेडिट 72 न्यूक्लियर फ्यूल रॉड सेव करता हूं पहले। जानता था। लोड कुछ चोरी नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली मैं, और मैं वो लैरी को डेफिनेटली नहीं मारना चाहता। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, अब सीधे से लैरी के बारे में जानना होगा। ओके हाँ मैंने सुना था कि ड्रैगन्स डॉगमा बजट कट के वजह से काफ़ी कुछ निकाला था, पर मुझे नहीं मालूम था वो इतना ज़्यादा काटा। मैं सोचा था कुछ 20 या 30% काटा होगा। 60%
काटना पड़ा उन्हें। इतना ज्यादा मैं उम्मीद नहीं कर रहा था सही में। So what brings you aboard? Usually जब Business or bar would have been nice, but Trident's gouging us for every credit we've got. क्योंकि कट कंटेंट की जब बारे में बात करते हैं तो 20-30% या कभी-कभी 10% होता है। 60% बहुत हाई है सही में। Society chair has really outdone herself this time. बाप रे बाप। I certainly hope they decide to hold all future society events aboard a Starliner. Hello. Are you a member of the society? Quite a lovely Starliner. इससे बात करना है। But the best Have you for tried the society, canopies? huh? Horrid. Positively horrid. Not much, other than the fact that they host these wonderfully... नहीं। The society is such a worthy cause. What could be more important than the preservation of the Earth's spirit? मैंने गलती से राइट क्लिक कर दिया यार। ये मेरा कभी-कभी उंगलियां ट्विच हो जाती हैं और बटन्स दब जाते हैं अपने आप, जबकि मैं दबाना नहीं चाहता हूँ। ये कई बार होता है मेरे साथ सही में। Is this about that feature SSNN ran a few years ago? I can assure you, this is a legitimate charity organization. You don't necessarily have to be wealthy to contribute, though the minimum donation level is 5,000 credits. The society was founded about 8 years ago by Carl S.A. Worthington, a prominent businessman from New Atlantis. I'm a silver member of the society, but only 100,000 more credits, and I hit the gold tier. Donations to the society can be debited from my bank account on a monthly basis. I barely have to lift a finger to help. Well, अभी तो कैपकॉम के सारे गेम्स हिट के ऊपर हिट होते जा रहे हैं। Earth itself. I keep mine on my desk. रेजिडेंट इवल के सारे गेम्स हिट हो रहे हैं उनके। Alive in our hearts. I'm doing my part by attending this spectacular event. It's a shame that the Earth ended in such a sorry state, but I'm glad the society has the nerve to do something about it. उसके अलावा फाइनल फैंटेसी भी हिट हो रहा है। फाइनल फैंटेसी 14 जो है ऑनलाइन, उससे तो पैसे आते ही जा रहे होंगे कैपकॉम को। फाइनल फैंटेसी 16 भी बहुत बड़ा हिट हुआ। मॉन्स्टर हंटर उन्होंने बनाया कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ सही बोलूँ तो, पर अगर मॉन्स्टर हंटर भी कैपकॉम ने ही बनाया, एक्चुअली चेक कर सकता हूँ खुद ही मॉन्स्टर हंटर किसने बनाया। हाँ, वो भी कैपकॉम का ही है मॉन्स्टर हंटर। सारे के सारे गेम्स उनके हिट होते ही जा रहे हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से अब उनके पास पैसा है काफ़ी इस ऐसे प्रोजेक्ट में डालने के लिए। और प्लस इसका जो डायरेक्टर है उसने क्या बोलते हैं, कौन सा किया था, कौन सा डेविल में क्राई 5 भी किया था मेरे हिसाब से, उस पर काम किया था। और उससे भी वो भी इतना बड़ा हिट हुआ, तो कैपकॉम को डायरेक्टर पे भी भरोसा है। और वो इसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये ड्रैगन्स डॉगमा ड्रीम प्रोजेक्ट था, या जो भी उससे बोलते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट या को। तो अच्छा हिट भी दिया उसने, तो भरोसा भी है। तो मेरे हिसाब से वो डिसाइड किया कि ठीक है चलता है, पैसे दे देते हैं, इसे बना देगा। सही में बहुत हाई क्वालिटी है। मुझे रेजिडेंट इवल गेम 7 बहुत पसंद आया, 8 भी अच्छा था, 2 भी खेला, वो भी बहुत पसंद आया, 3 और 4 भी खेलने वाला हूँ मैं। रेजिडेंट इवल मैं करंटली सही बोलूँ तो बोल सकता हूँ रेजिडेंट इवल जो है ना वो मेरा अभी करंटली फेवरेट सीरीज है। मैंने रेजिडेंट इवल 6 भी खेला था, जिसमें ये अफ्रीका में कुछ होता है। हाँ, फाइनल फैंटेसी स्क्वायर इनिक्स का है तो वो अलग है, पर डेविल में क्राई कैपकॉम का है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और मुझे नहीं लगता मैं गलत हूँ। जब कैपकॉम का है। हाँ, तो फिर रेजिडेंट इवल 5 खेला था। वो एक्चुअली मैंने अपने क्या बोलते वो टॉरेंट डाउनलोड किया था या कोई पायरेटेड गेम खरीदा था उसका। उसके फाइनल बॉस में क्या बोलते हैं मेरा कंप्यूटर इतना लो था कि मारने से पहले जो क्विक टाइम इवेंट होता था ना, आखिरी वाला क्विक टाइम इवेंट, उसमें इतना स्लो हो जाता था मेरा कंप्यूटर कि मैं भले ही दबाते रहता था ये बटन जो दबाना चाहिए,
पर वो गेम रजिस्टर ही नहीं करता था। बहुत बार ट्राई करने के बाद फाइनली एक बार हो गया। रेजिडेंट इविल 5 भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, बल्कि 1 भी मैंने खेलने की कोशिश की थी। वो एक बहुत पहले खेलने की कोशिश की थी, पायरेटेड वर्जन खरीदा था, खेला था वो, और उसमें बीच में अटक गया था, वरना वो भी पसंद आ रहा था। पायरेटेड वर्जन था, कुछ करप्ट हो गया या कुछ। तो मैं ट्रेन में था, ट्रेन में ये नेमेसिस आता है हम पे हमला करने के लिए, तो वहां पे मेरा कुछ करप्ट हो गया था, उसके आगे मैं जा ही नहीं पा रहा था। उसके बाद अगला रेजिडेंट इवल जो खेला वो रेजिडेंट इवल 5 था। रेजिडेंट इवल 6 के मैंने ज़्यादा कुछ अच्छे सुने नहीं थे, सही बोलूँ तो रिव्यू। तो रेजिडेंट इवल 5 के बाद 7 खेला, बहुत पसंद आया। अच्छा हॉरर एस्पेक्ट उसका अच्छा था। 8 ज़्यादा एक्शन पैक्ड है, उसका हॉरर सिर्फ और सिर्फ बेनिवियंटो हाउस है, पर फिर भी ठीक ही है। 2 भी ज़्यादा उस अच्छा है, उसका मिक्स हॉरर और एक्शन का सही में। स्पेशली जब नेमेसिस नहीं है उसमें, मिस्टर एक्स जब तुम्हारा पीछा करता रहता है, उसमें काफ़ी क्या बोलते हैं टेंशन वाला हो सकता है, वो बहुत अच्छा है। बहुत क्लासिक गेम से सही में। पर सही बोलूँ ना, उन्होंने काफ़ी रीमेक्स बना दिए रेजिडेंट इवल के। अब उन्हें नेक्स्ट बनाना चाहिए, रेजिडेंट इवल 9। मैं उसका वेट कर रहा हूँ। अब मैं खेलूंगा 3 और 4 खेलूंगा, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ सही में कि उन्होंने अब ये ख़त्म कर दिया, इसका DLC भी बना दिया रेजिडेंट इवल 4 का। तो अब वो क्या बोलते हैं रेजिडेंट इवल 9 पे काम करेंगे। मुझे अगला गेम चाहिए रेजिडेंट इवल सीरीज का। ये ईथन विंटर्स का तो होगा नहीं, उसकी कहानी उन्होंने इसमें पूरा रैप अप कर दी रेजिडेंट इवल 8 में। तो अब जानना चाहता हूँ नेक्स्ट कहाँ पे जाएंगे ये कहानी के साथ। That award is such a joke. It's for members of the society to pat their own backs for spending the most money on the cause. I honestly don't really know anything else about the award. में ये बाबा बस नया डायलॉग बोलते ही जाएगा क्या? I don't know why Larry's attending this event. He could care less about any planet, let alone the Earth. Could we talk about something else? Not much, other than the fact that they host these wonderfully entertaining gala events every month. अगर उसने रेजिडेंट इवल DMC 3 to 5 किया है, वो पूरा एक्शन पैक्ड वाला, ड्रैगन्स डॉगमा भी किया है, तो सही बंदा है इत्सुनो भी। और प्लस इनका ये भी है ना कि एक सेपरेट स्टूडियो होता है जो एक पर्टिकुलर सीरीज में काम करते हैं। ये जैसे ये अभी करंटली फाइनल फैंटेसी का जो है वो क्रिएटिव स्टूडियो 3, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो हैंडल करते हैं अब ये फाइनल फैंटेसी के गेम्स, या एटलीस्ट फाइनल फैंटेसी 16 उन्होंने बनाया था। क्रिएटिव स्टूडियो 3 या जो भी उनका नाम है, उन्होंने भी वो भी फाइनल फैंटेसी 14 पे भी काम कर रहे हैं। और फिर ये DMC का भी एक सेपरेट स्टूडियो मेरे हिसाब से, और इत्सुनो शायद उसका हेड है क्या डेविल मे क्राई का, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, सही बोलूँ तो मुझे याद नहीं आ रहा। कैपकॉम की प्रोडक्शन पाइपलाइन काफ़ी ग्रेट है, दे हैव मल्टीपल टीम्स वर्किंग ऑन ईच ऑफ द मेन लाइन। हाँ वही मैं अभी उसी की बात कर रहा था। इत्सुनो पता नहीं वो डेविल मे क्राई का हेड है कि नहीं, पर उसका भी एक सेपरेट स्टूडियो है, वो मुझे इतना याद है। 3 मेन स्टूडियोज हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ कैपकॉम के, उनमें से एक ये है क्रिएटिव स्टूडियोज 3 जो मैंने बात की थी, और फिर बाकी 2 मेरे हिसाब से उनके बाकी 2 जो अच्छे फ्रेंचाइजेस हैं, डेविल मे क्राई फॉर एग्जांपल वो, और एक और मेरे हिसाब से मॉन्स्टर हंटर पे काम करते हैं, तीसरा वाला। तो उनके पास 3 बहुत अच्छे फ्रेंचाइजेस हैं अभी करंटली। और अगर ड्रैगन्स डॉगमा 2 भी हिट हो गया तो मैं श्योर हूँ उसके लिए भी एक सेपरेट स्टूडियो बना देंगे, और फिर वो एक और उनका सीरीज बन जाएगा जिन पे वो काम कर सकते हैं अच्छी तरह। अभी के लिए तो उनके मेन 3 जो हैं वो है फाइनल फैंटेसी, नहीं सॉरी बाबा, फाइनल फैंटेसी क्यों बोल, हाँ फाइनल फैंटेसी ही है, फाइनल फैंटेसी है उनका मेन सीरीज। उसके अलावा नेक्स्ट है रेजिडेंट इवल और मॉन्स्टर हंटर,
ये 3 उनके मेन है बेसिकली, रेजिडेंट इवल, मॉन्स्टर हंटर और क्या बोला था, डेविल मे क्राई। स्ट्रीट फाइटर भी शायद होगा पर पता नहीं मुझे, मैं ज़्यादा फाइटिंग गेम्स का उतना खेलता नहीं, ना तो खेलता हूँ ना उनका ज़्यादा देखता हूँ, बस देखता हूँ कि रिलीज़ हो रहे हैं कि नहीं। पर स्ट्रीट फाइटर के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, सही बोलूँ तो। ये 3 मुझे मालूम है, डेविल मे क्राई, मॉन्स्टर हंटर और रेजिडेंट इवल और मॉन्स्टर हंटर बल्कि मैंने खेला भी है। डेविल मे क्राई का मैंने कोई खेला नहीं है, खेलने की सोची है कई बार, तो वो ये इतने ज़्यादा गेम्स, हर किसी गेम को मैं बोलते जाता हूँ खेलना चाहता हूँ, समय ही नहीं मिलता है मुझे। वही प्रॉब्लम होती है ना, हमेशा समय ही नहीं होता है सारे गेम्स खेलने का। तो थोड़ा और बता दे। Besides what I already told you? No. अगर कुछ और नहीं बता सकता तो बेकार में क्यों बात कर रहा हूँ मैं तुझसे? Well, that was boring. Quite a lovely starliner. Nothing but the best for the society, huh? नहीं. If you have any specific requests, please speak to one of the crew's attendants. An open bar would have been nice. Trident's gouging us for every credit we've got. Sorry, I'm busy. Maybe we'll talk another time. I'm sorry, but unless you're reporting a security situation, I need to get back to my duties. ये कुछ बोल पाएंगे? I certainly hope they decide to hold all future society events aboard a starliner. I heard he uses Galbank's VIP suites on the Siren of the Stars almost monthly. Does the man ever do any real work? Haven't we already talked? Nice to have met you. Okay, ये क्या बताएगा? Here for business or pleasure? Let's put it this way. He screwed over so many people, if he suddenly disappeared from the universe, I don't think anyone would miss him. I've already told you. Not much, other than the fact that they host these wonderfully entertaining gala events every month. Enjoy the rest of the event. बात कर दिया. Hello. Are pleased to make your acquaintance. Larry has an A-level executive rating over at Galbank, which means he has access to everyone's accounts at the touch of a button. No. And why are you so interested in him anyway? Okay. That's all then? Okay. Oh, ये लैरी ड्रम्स की है. Okay. Please remain in designated passenger areas at all times. Have a safe journey. I've done this particular cruise run several times, and I can assure you that the route is quite safe. The society chair has really outdone herself this time. His behavior towards women is abominable. That man really ought to be ashamed of himself. Could we talk about something else? Nah, not really. तूने जो बताना था Don't बता forget दिया. to donate to the cause. The society chair has really outdone herself this time. He's been spending a lot of time with Claudia Swist. Quality time, if you catch my meaning. I'm certain his wife doesn't know a thing about it. Okay. Enjoy the rest of the event. Claudia Swist का हो रही. कैपकॉम टीम 1 जो मोस्ट फ्लैगशिप एंड इम्पोर्ट. तो अभी करंटली कैपकॉम टीम 1 किस पे काम कर रही है, कौन से गेम पे? वही थी क्या जिन्होंने ये रेजिडेंट इवल 4 बनाया, तो अभी DLC खत्म किया जिन्होंने, या फिर वो अपना नेक्स्ट मॉन्स्टर हंटर गेम बना रही है वो करंटली? क्योंकि राइस का तो मेरे हिसाब से अब खत्म ही हो गया. मेन गेम आ गया, एक बड़ा सा एक्सपेंशन भी आ गया है, अब बस थोड़े थोड़े अपडेट अपने आप होते जाएंगे. सेव कर दो. तो नेक्स्ट मेन लाइन गेम मेरे हिसाब से बनने ही वाला होगा इसका, मॉन्स्टर हंटर का. Sorry, do I know you? Okay, wait, are you seriously... are you trying to pick me up? No. Look, I appreciate the compliment, but I'm already seeing someone, and my partner doesn't like competition.
He gets very jealous. Ooh. Who? Look, can you just cut to the chase already? What's this about? I can't believe this is happening. I told Larry to keep his big mouth shut, but did he listen? No! He had to impress his friends and treat me like a trophy. Look, I've been in this business for a long time, and I know how this game works, so let's skip all the banter and get it over with. What's it gonna take to make us both happy? Your ex-corp? Then there's no fooling you, is there? I don't have the cash to buy your silence, but I can give you information that might help you bury Dombrowski. You know, this whole thing really pisses me off. Larry and I had the perfect scheme where thousands of credits all worked out, and then he goes and flushes the whole thing down the toilet. You know, if I had a credit for every time I heard a criminal say I had the perfect scheme all worked out, I'd be a damn millionaire. Yeah, well, it was perfect. Foolproof. Until I trusted that asshole. I didn't know who the hell you were. For all I knew, you were working for Dombrowski. It's called playing it cool. You should try it sometime. I'm not gonna tell you. Let's just say that I'd be sent to prison for a long time if Galbank figured it out. Oh, angry isn't even the right word. The plan was solid. Larry got together with myself and this other guy, Gabriel Vera. He's some bigwig over at UC Security. I doctored the transactions, Larry wiped them off the system, and Vera kept the legal pressure off of us. We were scamming Galbank for months. It was going well until I discovered Larry was cheating everyone by changing each transaction in his favor before deleting them. Oh, I know he was using me. At the same time, he was saying how much he loved me. He was stringing me along and stabbing me in the back. I was going to confront him back on Jemison, but then he invited me on this little trip through the stars. All expenses paid, first-class accommodations, the works. I figured, why not wait until I've milked him for every credit he's spending before I drop the hammer? You won't do that. You're here because you've got some kind of side hustle in the works. If you wanted to blow the whistle, you would have boarded this ship with the authorities. I wish I had some. Maybe you should try talking to Gabriel Vera. He should be around here somewhere. If he doesn't want to cooperate, just mention my name. That should grab his attention. Good luck. You're gonna need it. Okay. What, are you writing a damn novel? Fine. Vera works for UC Security, so he kept a lookout on their commnet for any Galbank chatter. I guess you could call him our early warning system. And Dombrowski made sure that all of the crypto manipulation I was working on didn't turn up in Galbank's automatic audits. You need top clearance for that kind of access, so we had to cut him in, whether we liked it or not. What do you think is going on? I'm using that gullible idiot to get what I want. If I have to squash him on my way to the top, then so be it. Let's get one thing straight. Larry Dombrowski's no saint. He deserves everything that's coming to him. You do hear the words you're saying, right? Well, maybe self-reflection ain't her strong suit. Where the hell do you get off judging me? You don't know that asshole like I do, okay? Dombrowski is a piece of human garbage. He'd stab you in the back for table scraps, then stab you again to steal dessert. The plan's always been to milk the guy for everything he's worth, and then leave him in the dust. Not bad for a lowly Galbank worker drone, right? I wrote a computer algorithm that basically creates a randomized number of false ghost credits that mimic the crypto key of actual credits. Then the algorithm simply passes the ghost credits to whatever legit transfers that the bank transacts.
The genuine credits enter a dummy account. The best part is that I also alter the crypto keys as the real cash flows into our accounts. By the time it lands in our pockets, the creds are clean. So, on paper, it appears that all of the bank's transactions are covered, when it's really just our ghosted dummy creds. Genius, right? Okay, इससे बात हो गई. I hope you heard Dombrowski. Nail his ass right to the wall. एक मिनट रुकना नाइट भाई, देखता हूँ इन्होंने शुरू कर दिया क्या वैरायटी भाई ने. बस थोड़ा लाइक करके आ जाता हूँ उनके स्ट्रीम का, अगर शुरू कर दिया तो. हाँ, शुरू कर दिया. यो वैरायटी भाई, NG प्लस और नाइट के इक्विपमेंट का मज़ा लो. मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए आया हूँ स्ट्रीम में. अबे भाई एच नाइट, मुझे पवन बनाने के लिए वापस वो मेन सिटी आना पड़ेगा क्या? अबे यार मेरे पास तो वेपन भी नहीं है बेंच में. तो वॉरियर क्लास की वेपन थी मेरे पास, तो इस क्लास की वेपन भी नहीं है. मैं क्या चलाऊं अब? चलो अब वापस इसका शुरू करते हैं. अब हमें ढूंढना है गैब्रियल वेरा को ना. क्या यार, इधर इस दो के इस बार आ रहा हूँ, एक बार फिर वापस जा रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ, फिर वापस जा रहा हूँ. Regarding the security of your items. हाँ, ठीक है. An open bar would have been nice. Oh, इस बंदे से पिछली बार बात करने की कोशिश की थी, पर इसने कहा था कि ये. You look a bit lost in these surroundings. Oh yes, इसका नाम गैब्रियल वेरा ही था ना. Hello. You here for the charity event? Oh, absolutely. I'm a firm believer that attending these types of events tends to absolve one of their sins and cleanse their soul. But something tells me you're not really here to discuss the event. What did you really want to talk about? Oh, I'm afraid that's a bit outside my wheelhouse. I work for UC Security, so I don't think I could be of much help. I have nothing to do with Galbank. To be honest, I'm here to keep an eye on the charity event. It might not be as glamorous an assignment as a colony rescue or taking down some criminals, but anything that keeps the peace is important to me. What is this all about, anyway? You mean specifically? Oh, I work for the Corporate Fraud Division. We monitor all of the major megacorp financials and transactions to ensure that nothing improper occurs. You're asking a lot of strange questions. What exactly do you want? Claudia sent you, did she? Look, friend, I don't know if you're just a little drunk, maybe a touch crazy, or both. Whatever you think you know about me, you're dead wrong. So back off. Really well done. You almost sounded believable. Almost. Don't test me. You have no idea how high up the chain I am with UC Security. Not only can I make you disappear, I can also make sure the settled systems forget you existed in the first place. Just in case you weren't aware, I am the authorities. Anything you try to report will boil down to your word against mine. And since I work for UC Security, who do you think people will believe? I could really bend your ear when you got a moment. Here for business or pleasure? तो इससे मदद लेनी ही पड़ी एंड में. Shit, यार इस बंदे से नहीं लेना चाहता मैं मदद. मैंने ऑलरेडी एक गलती कर दी इससे वो बात करने के लिए, क्या बोलते हैं, अवार्ड के बारे में बात की गलती कर दी.
I saw your little exchange with Vera. Keep that up and I guarantee that imbecile's gonna demand that you be arrested. Oh, absolutely. He's up the ladder at UC Security. Lots of pull. We have to handle this very delicately. No, it certainly didn't. But at least we know you've caught him on the back foot. There's clearly something going on between Vera, Swiss, and Dombrowski. But we need hard evidence to use it to our advantage. The problem is he's not gonna talk to you in public. We need to get Vera isolated so he'll spill everything he knows. Maybe, but if something goes wrong and he's able to raise an alarm, we're sunk. With all of these wealthy patrons aboard, the ship is crawling with security. Yeah, that's smart. Kill Vera, or anyone else involved in his conspiracy, and then Dombrowski heads for the hills. Besides, you really want to ace a member of UC Security and have them breathing down your neck? You'll be the top story on SSNN. No, there has to be a safer way. Smart. If there's an emergency, standard practice is for all passengers to clear the decks and report to their cabins for lockdown. I think the best chance we have would be to tamper with the life support sensors. Manipulate a few controls, and you can fool the monitoring system into thinking there's a life support failure. And there you have your emergency. This is one of Trident's premier starliners. That means it has the best of everything, including a triple redundancy life support system. They installed a backup with a backup. Luckily for us, it will still trip an emergency and everyone will have to return to their quarters until I sound the all clear, which I won't. Just pointing out that life support supports life, like you and me. This is great. Don't worry. It'll be as easy as it was mingling with the guests at the party. Just throw a few lousy switches and you're done. One more thing. If Chief Engineer Sundin gives you any trouble, tell him I'll erase that gambling debt he owes me. I prefer you use that as a last resort, but hey, what's the harm in losing a few credits when I'm on the brink of rejoining the fleet, right? Anyway, I better start packing. Things are getting hot around here, and won't be long before Trident figures out you had help. On the surface, he's an upstanding citizen of the United Colonies, pretty high up in UC Security. Lots of clout with mast. Underneath, he's a greedy piece of garbage. Given the chance, he'd backstab you for a cret stick and pin the murder on someone else. Come to think of it, if he wasn't such a petty tyrant, he'd probably thrive with the Crimson Fleet. All passengers are instructed to immediately report to their cabins. That way, we keep the halls clear and avoid a panic. Fortunately for us, all of the passenger cabin doors will automatically unlock. This is normally to ensure the crew can check cabins quickly and without interference. But in our case, it's like having an all-access pass. There's access to the crew section that you can reach through the Starview Ballroom. Chief Sundin should be there, wasting time at his station as usual. Have fun with that guy. He's a real piece of work. Once you're past Sundin, just look for the room marked Environmental Control. Everything you need is inside. Okay, इससे सब कुछ बात कर दिया. You have somewhere to be. I'd appreciate it when you're able. Nope. I certainly hope they decide to hold all future society. बहुत अच्छे कंफ्यूजन्स हो गया मेरा. कुछ भी नहीं है. यहाँ पे क्या जा रहे हैं? इंजीनियरिंग डेक. ठीक है, जाके देखते हैं इंजीनियरिंग डेक में क्या मिलेगा मुझे.
6,000 2,000 इसे रख लो। और 1 मिनट रुकना यार, इससे क्या हुआ अब? मीले अटैक्स यूज O2। ओ बिल्कुल नहीं, ये इस्तेमाल करना होगा 8। किसके साथ होता है ये? ढूंढना इतना प्रॉब्लम होता है यार। इन्फ्यूज बैंडेजेस, ठीक है। कोई और है मेरे पास इसके लिए? सिर्फ और सिर्फ इन्फ्यूज बैंडेजेस ही है। एक और है रिपेयरिंग इमोबिलाइजर, ठीक है। और मैं क्या, मैं वो बैंडेज, इन्फ्यूज बैंडेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलो एक्चुअली 1 मिनट रुकना, थोड़ी चीजें इससे भी दे सकता हूँ पर अभी के लिए नहीं। You're a guest of Captain Rokov, right? Welcome aboard. ओके, ये मुझे देख रही नहीं है ना, तो शायद ये कर सकता हूँ अनलॉक। ओह क्विक सेव था लकीली, क्विक लोड नहीं वो। ओह बाप रे बाप, ये हो गया इसका। और आसान था ये। टॉक्सिन्स ले लो। ओह ना, ओह डैम, टेक ऑल ऑफ कोर्स। कॉन्ट्राबैंड यहाँ पे छुपाया हुआ था ये कैप्टन ने, उस बंदे का नाम जो भी था। सही किया यहाँ पे आके। यहाँ पे और भी कॉन्ट्राबैंड होगा, मुझे पूरा यकीन है। At least it's times right. I'd appreciate a chat. इससे बात करने से पहले मुझे ये थोड़ा अपना बढ़ाना है। रूट भी ऐसा होता है ना, रियल ये नहीं है, शॉर्ट नहीं, ये है ना, +12 persuasion चांस। अब सेव करो। Hey, hold up. This area is off limits to passengers. Wait a second. You're Captain Rokov's guest, right? Didn't expect to see you down here. Sorry to give you trouble. What can I do for you? Yeah, a little. A few of the techs call this deck the dungeon. I think you can see why. Not exactly Starliner class comfort down here. Don't get me wrong. The quiet gives me time to gather my thoughts, catch up on work, and all that, but I'd rather work on the bridge. I'm the Siren's chief engineer. Trident put me in charge of the entire tech team. We do our best to keep the ship running smoothly and efficiently. Of course, this beauty is a cutting-edge piece of spacecraft design. Almost everything has triple redundancy, like the life support system. Unfortunately, that means there's quite a bit of downtime. Could be worse though, right? Oh, sorry, that area's off limits. No exceptions. No, sorry, I'm afraid it's impossible. Trident regulations strictly prohibit anyone from entering the life support area without a valid reason. Look, I'm not trying to be a jerk here, it's just that I could lose my job, you know? मैं खुद के क्रेडिट्स क्यों खर्च करूं? ये रोकोव खर्च करेगा अपने क्रेडिट्स या खोएगा अपने क्रेडिट्स? Oh, really? Well, that changes things quite a bit. Tell you what, I'm just going to step out for a bit and stretch my legs. Maybe you can hold this for me while I'm away? Honestly, he's a seasoned ship captain. He told me he was a long hauler for years, and the experience shows. Only thing is,
He's always talking about trade deals and plans for get-rich-quick schemes. It's all the guy ever thinks about. Why he decided to be a Starliner captain, I'll never know. It's almost like he craves being around money. Tell you what, though, for someone that loves credit so much, he sure doesn't mind gambling them when we play cards. Yeah, a little. A few of the techs call this deck done. Don't get me wrong. I'm the Siren's chief engineer. Trident put me in charge of the entire tech team. We do our best to keep the ship running smoothly and efficiently. Of course, this beauty is a cutting-edge piece of spacecraft design. Almost everything has triple redundancy, like the life support system. Unfortunately, that means there's quite a bit of down. कुछ नया नहीं है. Whatever you do, don't break anything, or I'll be out of a job. निकल यहाँ से. If an automated emergency lockdown procedure will be placed immediately, all passengers. हाँ ठीक है. If the captain please recognize the proper chain as per. ठीक है. All interior unlock. ठीक है. Emergency procedure. This cannot be sealed without a chief engineer on duty. ठीक है. और अब जाना है यहाँ पे. Oh shit, ये ट्रिपल redundancy. 1 2 3. All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. Who the hell shut down the life support? Chief Sandin is going to be pissed. हम उधर से आए हैं. तुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमने किया? Don't worry. This ship is equipped with 2 backups for the life support system. Everything will be fine. चलो अब जाके उससे बात करते हैं. कैबिल वेरा का रूम जहाँ पर भी है उधर जाके. एकदम सुनसान. कोई क्रेडिट्स छोड़ा इन्होंने यहाँ पे? No more music. Can you get a moment? Can we talk? यार ये डायलॉग अगले दूसरे डायलॉग से इसके बंद हो जाते हैं इसकी वजह से. How do you even manage to carry all that? कोई क्रेडिट नहीं छोड़ा इन्होंने. I'd appreciate it when you're able. मालूम है क्या? ठीक है. क्राफ्टिंग कंपोनेंट्स मुझे उठाना पसंद है. वो पर नहीं लूंगा मैं. शार्डन है या जो भी है. यार ये परसुएट का बेकार में मैंने कर दिया. May I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. और मुझे लगा था ये 6000 का. डेफिनेटली लेता हूँ. कुछ चोरी करना चाहता हूँ. यहाँ पर कुछ दिख रहा ही नहीं है चोरी करने लायक. एक मुझे 2 मैंने वो उठा लिए थे कॉन्ट्राबैंड जो मैं बेचूंगा. ओह शिट. This ship is in a state of emergency. Please return to your cabin immediately. Oh damn. Our security team would appreciate if you'd please shelter in your cabin during this emergency. Thank you. यहाँ पे है अभी भी. उसका है क्या? लैरी का? हाँ. All passengers are being asked to return to their cabins at this time. ये है शीला हॉलब्रुक. काफी चीजें हैं इसके पास. इससे भी चोरी कर लेना चाहिए था मुझे. I've got some stuff on my mind when you have the time. हाँ.
अभी टाइम नहीं है मेरे पास, जब टाइम होगा तब मैं बात करूंगा तुझसे। There's no cause for alarm. I'm sure this is just a minor malfunction or a drill. चलो। Siren of the Stars is now in emergency status. Please remain calm and proceed to your cabin. ठीक है, जाके आप करते हैं इससे बात। All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. सेव करो पहले। काफी चीजें हैं इस बंदे के पास। एमो स्पेशली वो डेफिनेटली चाहिए मुझे। वेपन केस नाइस। कैसे बैठा यार ये, पूरा पाँव ऊपर करके, 1 2 और फिर चलो बात करते हैं। I was wondering if you were the cause of the ship-wide emergency. It's time you stop playing games and tell me why you're here. अंडरकवर तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। क्रिम्सन फ्लीट का बोलूं कि नहीं? Dombrowski has something that the Crimson Fleet wants. ये तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा इस ये करप्ट ऑफिसर को। I always took him for a fool. I can't believe he's stupid enough to have gotten mixed up with the Crimson Fleet. Still, why would I possibly want to incriminate myself by handing over any evidence? And remain there until you receive further instructions. Don't act so surprised. You didn't really think I'd make a deal with Claudio Dombrowski without having a little insurance policy of my own, did you? Huh? If I've learned anything in my years at the corporate fraud division, it's always have an exit strategy. Claudia said that. You sure? Damn it! That means my money's already gone. And Dombrowski's going to walk away with a fortune. I'm not gonna lie to you, I don't want to end up on the Crimson Fleet shit list. But if I give you that information and it falls into the wrong hands, I'll end up in jail. This is a lose-lose situation for me. Oh, I've got everything you're gonna need. This is a one-stop shop for you. We're talking a slate loaded with dates, account numbers, ID scans, even an audio recording. It was my little insurance policy in case the shit hit the fan. There's a solid enough trail here to send Dombrowski straight to jail. Dombrowski had the authorization to wipe out records on Galbank's system without raising any red flags. I let Claudia talk me into that. She said she had him wrapped around her finger. Apparently, she was wrong. All passengers. चलो पे कर लेता हूँ, मैं अटैक नहीं करने वाला। At least I walk away with something. All right, you have yourself a deal. Here, with this slate and this recording to tie it all together, you'll be able to nail his ass to the wall. He'll do whatever you want. Just remember that you promised to leave me out of it. Okay. Well, since Claudia has been spending time disgustingly close to Dombrowski, I think she's suffered enough. On the other hand, I've got very, very special plans for Larry. I have some friends that can, well, let's just say, take care of the problem. That's if you leave him alive, of course. We'll just have to wait and see. All I can tell you is that there's more than a few people at Mast who find Commander Akande to be
a huge pain in the ass. I mean, the UC is aware that the Crimson Fleet is a problem, but it pales in comparison to the issues with the Freestar Collective. Ikande's loaded with big picture ideas, but not a ton of evidence to put them into action. And frankly, it's driving my superiors crazy. Just because I'm helping you nail Dombrowski doesn't mean I'm turning my back on UC security. How else am I going to ensure that he ends up behind bars when all this comes crashing down? No. You can leave me out of your merry little band of pirates, thank you very much. All I can tell you is that there's more than... I mean, the UC... Ikande's loaded with big... ये क्यों नहीं हो रहा ग्रेड आउट पता नहीं May I have your attention, please? Because if you don't tell him, declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain सेव करो जल्दी से there until you receive further instructions. I could really bend your ear when you got a moment. टाइम पे कर दिया मैंने अरे यार मैं ये भी खोलना चाहता था ठीक है कुछ भी नहीं बोला उसने सही है और वो वाला शायद ज्यादा अच्छा है मेरा करंट उससे एक मिनट रुकना पहले ये इक्विप करो फिर कहाँ पे ये नहीं ये नहीं है ये रहा ना कंपेयर करना है एक्यूरेसी कम है इसकी क्योंकि इसका लॉन्ग बैरल की जगह फोकस नोजल है जिससे मास कम हो जाती है मेरे हिसाब से पर डैमेज बढ़ता है डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा है ये पर वही है कि ये सेम चीज़ मैं उसमें भी कर सकता हूँ अगर मैं ये फोकस नोजल डाल दूँ तो पर ठीक है इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है तो डाल देता हूँ इसको बना देता हूँ मैं चलो ठीक है 30,000 का ही है दोनों के दोनों 30,000 के ऊपर है दोनों के दोनों बहुत पैसे देने वाले हैं मुझे Our security team would appreciate if you'd please shelter in your cabin during this emergency. Thank you. ओह नाइस ये नहीं है यहाँ पे आके डेफिनेटली सही किया मैंने सब कुछ ले लो अल्ट्रा मैग ऑफ कोर्स 158 पर वही है ना ये कॉमन है ओके ओह ये भी ले सकता हूँ मैं रेड शॉटगन ओह वाओ Huh? What was that? सेव करो All passengers. Yet. ओके ये किसने देखा था मुझे ये चोरी करते हुए ये सेव करो ये ले लो ये भी ले लो यहाँ पे से सब कुछ और फिर से सेव करो किसने देखा मुझे किसी ने भी नहीं देखा ना मुझे फिर से एक मिनट रुकना एक चीज करता हूँ बस मॉडिफाइड मैक्रो नहीं
इसे यहाँ पे डाल दो और फिर सेव करो। एडवांस से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए सही बोलूँ तो चलो शुरू करते हैं। नहीं, सबसे पहले बाहर वाले का करो। ये हुई ना बात? नहीं, हाँ, फिर नहीं यार, 1 2 3 4 चाहिए। शिट, गलत सोच रहा था मैं। अरे यार, ये वाला अगर इधर होता तो ये इसमें फिट हो जाता। फिर ये वाला चलेगा शायद। यप, ये हो गया। अब अंदर वाले का करना है। ये हो गया। शिट, ये और ये है, इसको नहीं हिलाना है। बाकी सबके साथ करो। 1 2 3, यही है मेरे हिसाब से। चलो, ये हो गया तो शुरू करते हैं। ये ठीक है, ये कुछ नया नहीं है, ये भी कुछ नया नहीं है। 14 पीसेस, ट्रॉफी लार्ज, स्टैम्प कलेक्शन, ब्ला 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 ब्ला। कुछ भी खास नहीं था इसका। मेरे पास कितने अभी है सही बोलूँ तो? पहली बात तो ओह शिट, सिर्फ 6 है मेरे पास। लोड करो यार, बेकार में इस पे क्यों वेस्ट करूं मैं एक डिजिपिक। कुछ ज्यादा कुछ बताता भी नहीं है यार। अब इनके रूम में जाके देखता हूँ। सेव करो, सब कुछ चोरी करो। कुछ चोरी करने लायक है भी कि नहीं इस बंदी के रूम में? All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. Ooh, my dear Claudia. Yesterday was amazing. The restaurant was exquisite and you looked beautiful, and after dinner the night we spent together was unforgettable. You know I would do anything for you. All you have to do is ask. I yearn for us to be together forever. Intend to break things off with my wife and leave that part of my life behind. Be patient my darling. I'll tell her soon. I promise. I love you now and forever. Blah 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 blah. झूठ और कुछ नहीं. Antique toy motorcycle. Oh yes. यहाँ पे मिलेगा कुछ। सेव करते हैं और फिर ये एक्सपर्ट का शुरू करते हैं। एक 2 हो गया, 3 वाला कोई है पास में? ये है ना, ठीक है। सबसे अंदर वाला हो गया, अब सबसे बाहर वाले का ढूंढना है। ये हो गया, ठीक है। सबसे बाहर वाला भी आसानी से हो गया। ये और ये, अब इसके साथ शुरू करते हैं।
ओके ये और ये इसके साथ सिर्फ एक ही बचा है, वो है ये। चलो ये काफी आसानी से हो गया, तो शुरू करते हैं। नहीं ये हाँ ये और फिर ये। एक 1600 77 को हिंदी में क्या बोलते हैं, दिमाग में आ रहा नहीं है अभी। कुछ भी नहीं था। चलो शीला के रूम में ज्यादा मिलेगा मेरे हिसाब से चोरी। ओह यहाँ पे भी एक। ओह डिजी पिक, यस। प्लीज मेरी तरफ मत देखना। इसी का डर था। ठीक है, एक तरीका है करने का। मैं अंदर हूं। You got time for a quick chat? I'd appreciate it when you're able. Haven't you gotten enough out of me already? ओके नहीं देखा बंदी ने। You've already ruined our. I hope you hurt Dombrowski. Nail his ass right to the wall. चलो यहाँ पे पता नहीं क्या है, पर जो भी है मैं चोरी करने वाला हूँ। Nope. Yes, trauma pack. All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. Cockpit inaccessible, ठीक है। यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ से ही गया था मैं। पता नहीं ये शुरुआत में क्यों नहीं चोरी किया था मैंने ये सब। कोई खड़ा हुआ था क्या यहाँ पे? ये शीला का रूम, मेरा गैब्रियल। शीला का रूम कहाँ है? ऊपर है क्या? All passengers are being asked to return to their cabins at this time. हाँ। Yep. वो बंदी पता नहीं कहाँ पे है, पर ये क्लोज कर दो। ओ यहाँ पर ही है। मैंने देखा भी नहीं इसे। नो वो अपने आप पीछे मुड़ गई ताकि उसे कुछ देखना न पड़े ये सब कुछ। और फिर भी बाय चांस। All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. हाँ कितने बात सुनना पड़ेगा ये। In an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. Hold. कुछ है? ये काफी खाना रखा है बंदी ने अपने रूम में। खाने के अलावा कुछ है ही नहीं इधर। वो रहा। चलो एक्सपर्ट का शुरू करते हैं। ओके 1 2 3 वाला कोई है?
ना ये उतना डिफरेंस नहीं है जितना चाहता हूँ। ये हो सकता है। यप, सबसे बाहर वाला हो गया। अब इसके साथ शुरू करते हैं। 1 2 3, फिर 1 2 3 4। एक मिनट रुकना। ये हो गया। ना, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ इसके साथ ही होगा। भाई ये सही है। तो फिर 1 2 3 वाला कोई है क्या? ये फॉर एग्जांपल इसका करूं अगर मैं। यस, सेकंड वाला भी हो गया। ये और ये सबसे बाहर का है, ये और ये सेकंड रिंग। अब थर्ड रिंग का करते हैं। ये सिंपल था। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, ये और ये, फिर ये। अरे यार, क्रेडिट्स चाहिए मुझे। उतना ज़्यादा क्रेडिट्स नहीं था जितना उम्मीद कर रहा था मैं। शायद कुछ हो। नो, 132 का मैं क्या करूँगा यार। और कोई है यहाँ पे जाने के लिए? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। अनफॉर्चुनेट। एक मिनट में, हाँ कुछ भी नहीं है। एक जगह जहाँ पे हो सकता है शायद वो ये है। यस, 12,000। और एक डिजी, 2 डिजिपिक। सही किया यहाँ पे आके। The Siren of the Stars is now in emergency status. Please remain calm and proceed. All passengers, may I have your attention, please? क्लैरिट से बात करना है अब। Has declared a ship-wide emergency. Please report to अंदर your आजा। cabins in an orderly fashion and remain आएगा तो there बाहर है। until you receive further instructions. यहाँ पे कुछ नहीं, पर यहाँ पे हो सकता है। यस, You gotta drop some. Could bend your ear when you got a moment. वेस्टेड सूट और ये एक्सपर्ट एक और। चलो शुरू करते हैं। अंदर का सबसे अंदर वाला ये इसके साथ हो गया। ये 3 वाला कोई है? नॉप। एक 2, सबसे बाहर का भी हो गया और सबसे अंदर का भी हो गया। अब बस ये 2 बचे ना। इसका कैसे है? 1 2 हो गया। तो फिर चलो शुरू करते हैं। ये काफ़ी आसानी से हो गया था। 1 2, ये फिर ये। ठीक है, ले रहा हूँ। क्रेडिट्स 968 सिर्फ। कंजूस कहीं का। क्रेडिट्स ऐसे बाहर नहीं रखता मेरे लेने के लिए। 1 हेल्थ -1। ओह फक नो, मैंने सोचा +1 हेल्थ पर सेकेंड में सोचा था लेने की। -1 क्यों लूँगा मैं?
3400 बुरा नहीं है। नाइस। और ये मेन चीज डिजिपिक्स मुझे चाहिए। फिर एक मिनट रुकना, मेरे पास अभी भी वो है क्या? नप, तो मुझे फिर से पीना होगा। नहीं नहीं, प्लस 12% ना, तो ये है। सेव करो। Well, well. You must be the one who's been accosting Claudia and Gabriel. I'm uncertain what you hope to accomplish here, but it appears we should rapidly enter into some sort of negotiation. You don't actually believe that I'd venture into such precarious criminal territory without a proper bird's-eye view of the situation, do you? I'm uncertain why you've become entangled in this spider's web, but this situation demands swift and resolute action. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. मुझे बाबा सुनने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जब मैं किसी बंदे से बात कर रहा हूँ। इसका वॉल्यूम कम कर दो इमरजेंसी रिस्पॉन्स का। Au contraire, my misguided friend. There's a bargain that needs to be hammered out, and you will listen to the facts before we proceed. First, it's clear that you've obtained insider knowledge of my arrangement to defraud Galbank. The means and the method, perhaps, but not the motive. And second, I'm going to hypothesize that my compatriots are despondent regarding their share and have assisted you with this endeavor. Since we're speaking and I'm not at the reporting end of a bullet, this leads me to conclude that you desire something personal from me. सही में ऐसे धीरे धीरे सारे शब्द स्ट्रेच करते हुए। You may as well ask, is it necessary for the sun to set on Jemison, or for one to wear a pressure suit when entering the vacuum of space? I pride myself on having an intensely thorough education, though I'd hardly call myself a professor. Though I'm sure that your compliment also meant you were having trouble understanding what I've been saying. In blunt terms, you have compromising materials about me in your possession. The only thing I have to offer in return are my Galbank credentials. I assume that's what you've been angling for all along? You know, when my number gets called up, I hope I handle it like this guy. I'm impressed, really. Well, I'm surprised you even posed that question at all. The answer is quite obvious. The last thing I'd want to do at this point is call attention to myself. Oh, it was actually a rather easy deduction to make. It's the only thing of significant value that I still have in my possession. It appears we've reached an accord. Wait, I'm sorry. Let me simplify that for you. It sounds like we have a deal. Oh, of course, I trust you'll understand if I ask for us to avoid any further contact. Now, if you'll excuse me, I need to formulate how I'm going to utterly ruin two very annoying business associates. Good day. You got time for a quick chat? I'd appreciate it when you're able. वो बहुत आसान था। मुझे बस ऐसे ही दे दिया। You can stand to drop a few pounds, and I don't mean a diet. I've got some stuff on my mind when you have All time. passengers,
May I have your सेव करो. attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. इतने सारी चीजें चोरी कर रहा हूँ. ये कुछ करने वाला है? इसके पास इतने ज्यादा निकल बाइक के क्यों है? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है. इसके नीचे भी शायद निकल बाइक ही होगा. और ये अटका हुआ है यहाँ पे. एक मिनट रुकना. लोड करके पहले फिर से बात करने की कोशिश करता हूँ. अगर बात कर सकता हूँ तो मतलब वो अटका हुआ था. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. ओके, ये कुछ बात नहीं करेगा. अब चोरी करने पे ही उठ रहा है, मतलब ये रिपोर्ट कर सकता है. तो छोड़ दो, कुछ नहीं ले रहा मैं उधर से. The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. This ship is in a state of emergency. Please return to your cabin immediately. हाँ, जा रहा हूँ मैं. कहाँ पर है ये बंदा, कैप्टन? सेव करो. Well, looks like everything worked out, just like we planned. I wish you hadn't blown away the gambling debt that Sandine owed me. But hey, you got the job done. You must be joking. After this little stunt I helped you pull, I'm certain Trident's going to rip up my captain's contract. I've got nowhere else to go, so I'm fully expecting that you'll put in a good word for me with Delgado. You know, I'm still wondering exactly what you needed those credentials for. You feel like telling me, partner? Nope. I usually have a nose for these things, but in your case, it's a mystery. Very frustrating. Whatever the case may be, it's apparently worth risking your life over. That's telling me it involves a lot of money. That also means I want in. So he told you to keep it from me. I see. I wouldn't want you to risk your position with the fleet like I did, so I'll just leave it alone. Anyway, I suppose there's nothing stopping you from rejoining. It's been a long time coming. I owe you one, Doberich. Don't worry, it's not an insult. It's a very old Russian word for comrade. It's what I intend to call you from now on, so get used to it. असल में वो वर्ड है क्या कॉम्रेड का? Nonsense. If there's one universal constant you can depend on, it's that Yevgeny Rokov always makes good on his deals. Always. Well, I suppose this is where we part company. Hopefully the next time we meet, we'll be aboard the Key. Proceed to New Atlantis? न्यू अटलांटिस क्यों? अरे हाँ, गैल बैंक का उधर है ना. ठीक है, मैं फास्ट ट्रैवल अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकता क्योंकि मैं ओवर एनकम्बर्ड हूँ. तो ऐसे ही जाना पड़ेगा. कॉकपिट शायद पहले जा पाता अगर मैंने ये इमरजेंसी से पहले किया होता तो. और ये नहाने का और कुछ नहीं.
कुछ भी All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Yes. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. सब कुछ खोलो। कुछ भी नहीं, टॉयलेट है ये बस। I'm a little busy. Can't you see that there's an emergency? Someone shut down the primary life support system. Gotta take a while to get it back online. Shipboard emergency. Can't talk right now, sorry. It's been a crazy 24 hours and I'm exhausted. Tried and short staffed the flight so that left 3 of us who had to stay up all night to set up the Starview ballroom. कार्गो डिवीजन में जाने की सोच रहा है ये बंदा, टेक ऑफिसर गलाटा। ओके, ये बंद कर दो ताकि वो देख ना सके मैं जो भी चोरी करूंगा। कुछ भी है क्या? Don't worry, this ship is equipped with 2 backups for the life support system. Everything will be fine. ये पता नहीं चोरी के लिए क्यों नहीं आ रहा है, और ये चाहता हूँ पर Who the hell shut down the life support? Chief Sandine is gonna be pissed. Unfortunately, ये अलार्म बंद देंगे अगर मैं उसको चोरी किया तो। ओ, यहाँ पे कोई नहीं है। कैप्टन रोकोफ कंप्यूटर। May I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. ठीक है, इसके कमरे में जाके चेक करता हूँ क्या है। कुछ तो होगा अच्छा होपफुली यहाँ पे, पर ये मास्टर है तो समय लगेगा इसे अनलॉक करने में। तो चलो शुरू करते हैं। ओह, शायद नोप, डैम इट, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं। पर ऐसे 2 नहीं है ना जो इस 2 का करे। ये पर हाँ, अब हो गया ना। कौन सा किया था मैंने? हाँ, ये और ये ठीक है। अब सेकंड रो का करना है। सेकंड रो में सिर्फ 2 ही हैं और 2 वाले ये है जो इसका नहीं होगा, तो मतलब एक ही तरीका है करने का, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अब थर्ड रो करते हैं। ये और कौन सा, ये नहीं था, ये और ये ना, ठीक है। ये 2 याद रखना है, पहले 2 फिर ये और ये, ठीक है। थर्ड रो में 1 2 3 4 है ना। ये हुआ, अब थर्ड रो भी हो गया। थर्ड रो ये और ये, ठीक है। ये 2 हो गया।
ओके, अब ये दो बच्चे हैं, ये वाला और ये वाला। एक इसके साथ हो गया, अब सिर्फ ये वाला बच्चा है। अनफॉर्चुनेटली तीसरे रिंग के लिए मैंने सारे खर्च कर दिया। ये करो, हो गया। ओके, सारे कर दिया, अब बस याद रखना है कौन कौन से हैं। ये नहीं है, ये वाला था क्या? ये और ये ना, हाँ ये शिट, ये और ये शिट, गलती करी। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। यस, लोड। ठीक है, ये दूसरा ट्राई है, देखते हैं कैसे जाता है ये दूसरा ट्राई। कोई एक जो सिर्फ और सिर्फ हाथ के लिए हो, ये रहा ना। मुझे लगता है ये, पता नहीं यार। हाँ, ये और ये सबसे बाहर वाले के लिए। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकंड वाला चाहिए मुझे कोई जो सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले के लिए हो। ऐसा कोई है? नॉप, ठीक है, ऐसा कोई है नहीं अनफॉर्चुनेटली। एक, दो, तो ये और ये। अब थर्ड वाले के लिए था, मुझे मालूम है। एक, दो, ऑपोजिट एंड में ये था। थर्ड वाला भी हो गया है। ये फिर ये वाला है ना, तो एक बार फिर से करता हूँ। ये सेकंड वाले के लिए, फर्स्ट रिंग के लिए। सेकंड रिंग के लिए ये, सेकंड रिंग के लिए कौन सा है? सेकंड रिंग के लिए कौन सा था यार? रिंग के लिए है ये और ये, सेकंड रिंग के लिए है ये और ये। ओके ठीक है, अब थर्ड रिंग के लिए है ये और ये, लास्ट रिंग के लिए है ये और ये। ठीक है, चलो करते हैं अब ये शुरू। ये सही एकदम, ये वाला, फिर ये और ये। Everything I see a lot. Use bandage. Okay, what are you hiding? I've got some stuff on my mind. When you have the time. Oh, once again, I'm refusing your request to rejoin. We are not a membership club here, Rocco. This is a goddamn apply. You try out, and if Nema doesn't put a hole in your skull, you get picked. That's how it works. You already went through it once. You had your chance and you blew it. Okay. और इसने कर दिया, मदद की हमें, तो मैं एक नाइस वर्ड डाल दूंगा जैसे वो चाहता है।
पे और कुछ नहीं है क्या? चलो देखता हूँ वर्थ इट है कि नहीं। पहली बात, 9 बजे से ज़्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए। ये रहा। और फिर ये इसके लिए, और ये यहाँ पे 1 2 No. 10 crates of precious metal. हाँ ठीक है। कुछ नया है नहीं। ये मेरे हिसाब से नेवा से है। ज़्यादा कुछ मेरे लिए एक डिजिपे खर्च करने लायक कुछ नहीं था इसमें। चलो, और क्या है यहाँ पे? यहाँ से आया हूँ मैं। I'm a little busy. Can't you see that there's an emergency? Someone shut down the primary life support system. Going to take a while to get it back online. Ship-wide emergency. Can't talk right now. Sorry. हाँ ठीक है। कुछ चोरी नहीं करूँगा इनके सामने। जो लेना था मैंने ले लिया, अब निकलता हूँ यहाँ से। कोई यहाँ पे है नहीं तो चोरी कर लो सब कुछ। All passengers, may I have your attention, please? No, you may not. The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. Onion 2 हेल्प देगा। शिट, मैं ये उठाना चाहता था। कुछ बकवास सी चीज उठ गई। ड्रॉप। पाँच 3 20 5। हाँ। Are you training for some sort of weightlifting competition? I'm sure अगर मैं उस वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन के लिए ट्राई कर रहा होता तो मैं आसानी से जीत जाता। वो बंद हो जाए यार। ओके, Restores 4 health, सही है। Shit, नहीं ये नहीं था, या फिर ये था। वो धन्यवाद, यहाँ पे आया मैं। Damn, ये क्या? इतने सारी चीजें मैं छोड़ने वाला था यहाँ पे। चलो अब हो गया, अब निकलते हैं। कुकिंग स्टेशन से मैं स्टोर्स 5 हेल्थ। टेन हेल्थ वाला ले लेता हूँ यार, ये छोटे मोटे मैं नहीं उठाने वाला। और अब निकलते हैं यहाँ से, अगर मुझे रास्ता मिल जाए तो। नीचे जाने का रास्ता क्या है यार? ये रहा ना। I need to pack up and get out of here.
What is it now? कुछ नहीं, टेंशन मत ले, मैं भी निकल रही हूँ अब यहाँ से। डिजिपिक। नो 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 नो, ये भी देखता है मुझे। वाह भाई वाह। यार यहाँ से निकल जा, मुझे ये 2 डिजिपिक्स चाहिए। अब 950 का मैं क्यों उठाऊं? 3000 के ऊपर है। वो 2 डिजिपिक्स जो हैं वो मुझे उठाने हैं। All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. सेव करो फिर से। आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। नहीं, यहाँ से निकल जा। ये यार, हाँ नहीं नहीं नहीं, ये यार तू मेरे रास्ता क्यों रोक रहा है? जाते रहे, जाते रहे। यार इस तरह Passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. ओ यार, इधर आ। यप, ये 2 मुझे लेने नहीं दे रहा ये। यस, ले लिया मैंने किस तरह। कॉकपिट, और फिर यहां से निकलते हैं अनडॉक करके।
chat. ये यहाँ से निकल जाएगा क्या? नॉप नहीं जा रहा यहाँ से, मतलब यहाँ पर ही रहेगा। सही है। ओह शिट, मेरे पास कॉन्ट्राबैंड है, मैं भूल गया। वुल्फ सिस्टम का है। अपना कॉन्ट्राबैंड पहले पूरा सेल करना है मुझे। अच्छा हुआ मैंने उधर के लिए कोर्स नहीं डाला। बोर्ड और सबसे पहले जाके कॉन्ट्राबैंड सेल करो। I'd appreciate it when you're able. हाँ। We're asking everyone to take their name. इसके लिए क्या चाहिए मुझे? लाइट फ्यूज चाहिए। इसके लिए 7.5 mm ना, ठीक है। एक मिनट। 6.5 mm, 7.5 mm। सबसे कम कौन से हैं? 40 mm XPL 12G शेल, ठीक है। How may the trade of... Yes, of course. एमो पहले ले लो। 6.5 mm कहीं पे है? ये है। लाइट पार्टिकल फ्यूज है। 10.5 mm अनफॉर्चुनेटली नहीं है। वेल चल, वेपन सबसे पहले बेच दो इसे। राइफल है ये, और ये शॉटगन है 190 का। इसे भी रखना है। मॉडिफाइड माइक्रोगन बेच दो। 156, एक मिनट। हाँ, इसे रखो, इसे बेच दो। $207, बाप रे बाप। 148 Razorback। Crippling drills plus 30 damage on next after hitting a target slim। कॉम्पनसेटर है इसका, इसे रखना चाहता हूँ यार। Hitting a target slim against robots। 207 है ना ये। और मैं क्या $148, ये बिना किसी मॉड्स के 207 है। तो क्या इसे बेच रहा हूँ। ईगल, कोई ईगल है क्या मेरे पास? 279। ये नहीं, ये रहा ना पिस्टल। ये भी पिस्टल है, ये भी पिस्टल है, पर ये से 113 है, जबकि ये 279 है। इसको बेच दो, मेरे पास ज़्यादा अच्छा है।
90 shotgun 155. Randomly deals incendiary damage. Okay, 7. इसका मास ज़्यादा है compared to this. फायर रेट फुली ऑटोमेटिक से फायर रेट बढ़ेगा. बेसिकली इसका बढ़ा सकता हूँ, इसे बेच रहा हूँ यार. बहुत सोच लिया मैंने. एमो, शॉटगन, पैक्स बेचो, हेलमेट बेचो. अपैरल में ज़्यादा कुछ है नहीं. मिसलेनियस है ना मेन. ये हुई ना बात. रिसोर्सेस में मैं कुछ नहीं बेचने वाला. दोनों को रखता हूँ ताकि सारे मिल जाए यार. सही में करोसिव मेरा बिल्कुल भी नहीं है. इसके लिए मैं ये पहनता हूँ यहाँ अभी के लिए. उसके अलावा मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ बेच दिया. इसका अनफॉर्चुनेटली मिला नहीं ज़्यादा. 6.5 mm 40 भी नहीं मिला ज़्यादा. 12G शेल मैंने खरीदा थोड़ा. तो चलो सारे रिसोर्सेस को डाल दो. फिर भी नहीं है. 8 कुछ ज़्यादा ही हो रहा है यार मेरा. सही में फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि मैं ओवर लिमिट हूँ. मुझे 8 से इस्तेमाल करना शुरू करना होगा. काफ़ी ज़्यादा है. अल्फा सेंटोरी. अब लैंड करने का ऑप्शन है. कुछ सेल करने के लिए है नहीं मेरे पास. मुझे अभी वो चाहिए रिसर्च स्टेशन अपना. सही में यार वो डायरेक्टली कहाँ का क्यों दिखाता है जब यहाँ पे नहीं आना है. मेरे पास वो मास्क के पास का भी है, वो वहां का नहीं करने दिया मुझे. पूरा लंबा रास्ता दिखाया इस गेम ने. By the way, Captain, Sergeant Yubi was looking for you. Sounds like he's got more work. Commercial district. चलो चलते हैं. आप पास में ही है कम से कम. क्या डिस्प्ले उधर से दिखाया, ये ज़्यादा पास है. आउटलॉ मैं पूरा उधर से कहीं से आता, वरना अगर मैंने वो लॉज वाला लिया होता तो.
Hello. Welcome to the the Galbank Archives. May I see your credentials, please? Oh, no. None at all. I'm all alone down here. Yep. Completely by myself. Well, I guess you're down here too, right? So that's two of us now. Sorry, not trying to lie to you or anything. Just, yeah. Oh, no. No, this is just their deep storage facility. All the current records are upstairs in the main facility. This is where they put the older data onto long-term servers. Just one moment while I verify. Oh, yes, Mr. Dombrowski. Welcome, sir. Give me a moment to log your visit, and then I'll unseal the archives. Me? No. Look, this is my first day on the job. Just cut me some slack, okay? I can't afford to lose it. Got a wife and kids to feed. Everything checks out. Give me a moment to log your visit, and then I'll unseal the archives. There we go. Have a wonderful day. इसलिए वैसे बात कर रहा था वो. ना कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी? ये कर रहा हूँ क्या? एक मिनट रुकना. ये नहीं. हील हॉलर इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, पर तब उससे पहले इसको यहाँ पे डाल देता हूँ. खाली स्पेस है तो क्यों ना इस्तेमाल करूँ. हील हॉलर ये रहा. Me and my friend here are gonna teach you manners. क्या? एक बार में 3 करता है. ओह यस. ये लॉन्ग रेंज वेपन बिल्कुल भी नहीं है. इसका तो एमो बिल्कुल भी नहीं है. ड्रम बीट. यार ऊपर जा सकता हूँ क्या किसी तरह? ऊपर नहीं, पर यहाँ से इसके पीछे से आके मार सकता हूँ इसे. ये बस एक ही बचा अब. ओह हीट विजन. अब वापस एक बार ये कील हॉलर का लगाता हूँ. यस. एक दबाई रखूँ तो बस लगातार मारते रख सकता हूँ इसे. यार कोई और तरीका है क्या इसके पास जाने का? दूसरी तरफ से जाना होगा तो बहुत दूर हूँ मैं. और इसके पास हो जाऊंगा इससे. क्या? ओह Good. Is all that junk really necessary? Good. उधर छुपा हुआ है. मुझे लगा था इस तरफ छुपा होगा.
नाइस। यस 8000 बहुत अच्छे है। ओह डैम नाइस, रेयर हैवी 215 डेफिनेटली। ओह क्रेडिट्स नहीं, वो ग्रैंडल नहीं चाहता था मैं, डबल क्लिक गलती से हो गया। और वो वाला ग्रैंडल नहीं, 1400 वाला नहीं, बकवास वाला ग्रैंडल किसे चाहिए। ओके अब ऊपर चलते हैं। यहाँ पे भी किसी को मारा था ना मैंने। हाँ यहाँ से लेते हैं। Go ahead, observing proprietary CBR type encrypted transponder। हाँ सेरेंडिपिटी पता नहीं, लेगेसी ये था ना। ट्रांसपोर्ट क्लासिफाइड, क्लासिफाइड सब कुछ क्लास है। लास्ट नोन सिस्टम पोजीशन बेनॉक, प्लानिटरी लोकेशन बेनॉक 4। ओके प्रॉस्पेरिटी अननोन अननोन, फुल ट्रांसपोंडर लॉसेस, अनफॉर्चुनेट। सुप्रीमेसी सोल सैटर्न के पास एक है। ये एक मिनट, सुप्रीमेसी मुझे लग रहा है मैं पहले भी मिला, फिर भी ये याद रखूंगा। सोल सैटर्न और यहाँ पे बाहर जो है बंदा, उसके बारे में आप वो भी अंदर आ गया था। ओके आगे जाने से पहले एड हेल्थ वाला चाहिए। रिसोर्स 4 हेल्थ, 3 हेल्थ। ये नॉर्मल बस हेल्थ इंक्रीज करने वाला चाहिए यार मुझे अभी। 3 चीज 5 5 5 5 5। पाँच 2 2 5 5 10। पैरामोर नहीं, चलो वो काफ़ी मैंने कम कर दिया एटलीस्ट अपने 8 के।
और अब कहाँ जाना है मुझे? प्रोसीड टू द की। ओके, अनफॉर्चुनेटली मैं फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकता। इसे थोड़ा दे दूँ क्या मैं? जैसे मुझे 20 कम करना है तो उसके लिए क्या दूँ इसे? I don't got many friends, so I figure my past keeps you. Shit. Hell. लोड। इसको मैं बात करने वाला था इससे चीजें देने के लिए, पर भूल गया ये मुझसे बात करना चाहता है। नॉर्मली करना होगा ये। मुझे बहुत ज़्यादा एड्स का इस्तेमाल करना होगा यार। Be careful if you run into those ecliptic jerks. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बेसपोर्ट। मेरा कम नहीं हो रहा है CO2? एक मिनट रुकना। अब कम हो रहा है, पहले तो नहीं हो रहा था। एक मिनट रुकना। देखो ओके अब कम हो रहा है, थोड़ा रुक के कम होता है। ठीक है भागते हैं अभी, वैसे भी कम होने ही वाला है तो ज़्यादा जल्दी उधर पहुँचूँ तो अच्छा है। हाँ हाँ लगभग पहुँच गया। अब जाते हैं भैया। एक मिनट कहाँ पे है? ये था ना। यहाँ पे सेव कर दो और स्ट्रीम सही बोलो तो यहाँ पर ही बंद करता हूँ, मेरा लंच का समय हो गया। तो वैरायटी भाई, शुभ भाई, नाइट भाई, उसके अलावा जो कोई मेरे स्ट्रीम में जुड़े आज, स्ट्रीम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे लंच के बाद मिलता हूँ।